Hello, can you hear me? If you can hear me, just say something in the chat, please. This was a monstrous task. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Am I audible? Hello, can you hear me? If you can hear me, just say something in the chat, please. This was a monstrous task. Okay, alright. Just give me a moment, I'll just get some water for myself. Sorry for the delay, guys. मैं पहली बार stream कर रहा हूँ and I have a new machine and because of that मुझे पता नहीं था कैसे इसको सेटअप करना है because I just switched from Windows to Mac. So it's a learning curve for me. So I'm really sorry, but hi, I am extremely happy to see you here. First of all, thank you very much for waiting. I am really grateful for your presence here. Um, I haven't done much for this. मेरे को एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मिल गया था जिसकी वजह से आप लोगों को मैं असिस्ट कर सकता हूँ इन दिस क्विक रिविजन. आई ऑब्वियसली हैव माई ओन नोट्स बट something that CBSE has prepared for all of us is something that we can also hear you own live stream running in the background. Okay, all right. I hope that isn't common now, but yeah. Okay, guys, just give me 1 minute. I'll just load up the document and we'll start studying, and there won't be any further delay. हाँ, yes, VJ Gamer. कर तो रहा था, but I kind of wanted to figure it out myself. If I depend on others for everything, I won't be able to learn anything. So, क्या करूँ मैं? All right. If you guys have any doubts until then, please put them in the chat box below, and I'll get back to you right here. I'm just loading the documents I have. Please bring for Hindi also. Siba Versetti, you're starting from zero. Okay, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा अगर आप zero से start कर रहे हो, remember this is a revision class. I want you to go to our channel, check out the playlist, and do everything that's there. Okay, we have, I think आपको 3 घंटे लगेंगे to finish your entire syllabus through the animated videos that we have created. तो आप वो कर दो, and I think I'll save this live stream तो आप आके बाद में देख लेना. It's no problem. हैंड रोटेट सुप्रीमेसी. ओके. यहाँ पे ऐसी चीज़ें की बातें हो रही हैं. ओके सर, एक बार इंट्रो हो जाए. हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल. अभी बस आ गया हूँ लाइव, बस डॉक्यूमेंट लोड कर रहा हूँ, फिर प्रॉपरली करते हैं एक बार. यूर अ कास्टर ऑल्सो? आई माइट बी. हाँ, नो हिंदी प्लीज़. दोनों में बोलना पड़ता है यार, क्या करूँ मैं. और 185 व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस हियर. इट मीन्स अ लॉट टू मी. इज़ रोड साइड स्टैंड इम्पॉर्टेंट? हाँ देखो, इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ है, बस अगर आप एक चीज़ छोड़ के जा रहे हो तो रिमेंबर कि आपको बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह करनी पड़ेगी. अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें? आप पहले जो भी आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसी में अनसीन पैसेज को पढ़ डालो. पहले अनसीन पैसेज को मत पढ़ना. फर्स्ट यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस गिवन. ठीक है, अगर आप ये करोगे देन योर ब्रेन विल बी प्राइम्ड विद दैट इन्फॉर्मेशन एंड यू लुक फॉर द आंसर्स इनसाइड द पैसेज. डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. आयुष राज यादव, शाउट आउट टू यू मैन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. ट्रिकी क्वेश्चन, मैंने आपको ये लास्ट मिनट टिप्स में बताया. यू नीड टू री रीड एवरी क्वेश्चन, लाइक एकदम जो भी है यू नीड टू री रीड इट लाइक 3-4 टाइम्स. अगर आप ऐसे बंदे हो या बंदी हो जो मिस्टेक्स करते हो, आपकी एज पे तो लोग मिस्टेक्स ही करते हैं, स्पेशली इन रोमांस. सो वेल, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल विथ वट एवर यूर रीडिंग. ये स्ट्रीम अप्रोक्सीमेटली कितने आवर्स की होगी? 1.5 hours मे बी, डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी क्वेश्चंस वी ऑल हैव. ओके, एनीवे, थिंक वी गोना स्टार्ट नाउ. All right, OBS.
I love how your voice is so pleasing. Thank you very much. Why you speak English so fluently? I don't know. मैं English honors पढ़ता हूँ तो वॉइस हॉट है. थैंक यू सर. ट्रिकी क्वेश्चन करा दो प्लीज़. ट्रिकी क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते. राइटिंग सेक्शन करवा दीजिए विदाउट यूजिंग वोकेबलरी. वीडियोस डले हुए हैं, आप देख सकते हो. आपकी वॉइस पे ना, आई एम प्लेइंग विद एनीबॉडी मैन. Okay, let it to the editor. How to give perfect answer of literature? There is no perfect answer per se. Just write whatever you can and make it make sense. कुछ बकवास नहीं लिखे होगे तो नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. Literature is extremely easy and that's what we're going to revise अभी, so it'll be just it. All right. Let me just make myself smaller. सर सिंगिंग करते हो क्या? करता हूँ यार, पता नहीं, शायद, पता नहीं. मैं तो बहुत चीज़ें करता हूँ. शुड लुक लाइक पुष्पराज? आई डोंट नो. आई लुक लाइक माई सेल्फ. हाई टू योर चैनल, गिव मी प्रॉमिनेंट डिस्क्रिप्शन. हाँ जी, थैंक यू. SEO मेरे को काम करना है. एक्सट्रैक्ट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. होते तो हैं, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे अपने सिलेबस को, आपको पता चल जाएगा. घुमा फिरा के देते हैं, कोई ट्रिक नहीं होगा, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता है. ये बहुत बड़ा मिथ है कि बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे कुछ होता है. बोर्ड पेपर में भड़ास निकाल सकते हैं, पॉसिबल. हाँ, बस पेन को ऐसे दबा दबा के लिख देना, हो गया काम आपका, भड़ास निकल गई. योर पर्सनल IG? आई डोंट हैव अ पर्सनल IG. सर इंटरव्यू चैप्टर अगेन एक्सप्लेन. ओके ओके. सो Eminem से इंग्लिश पढ़ो. सम मतलब यू से बिकम ह्यूमन. ये लो, इनसे पढ़ लो प्लीज. 200+ व्यूज. ऑलराइट. ओके, नाउ काफ़ी. टेक माई नेम. हेलो रिया. ओके, टेल मी इफ यू कैन हियर me correctly and if you can see the notes right there. बहुत chat type है. Thank you very much. इसका PDF दे दीजिए. हाँ, दे दूंगा अभी, क्लास के बाद दे दूंगा. ये मैंने नहीं प्रिपेयर किया. This is by the government, so gonna work like that. Yes, note share कर देंगे on the Telegram. We will do that for sure. Ads inserted, stream marker. Third ad. All right. Okay. Fine. Then we're gonna go straight into this. No more time to waste. Okay. So हमारा पहला चैप्टर है The Last Lesson. तो लास्ट लेसन का बेसिक प्रेमिस क्या है? आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट विद यू. द बेसिक प्रेमिस ऑफ द लास्ट लेसन इज कि वो एक मदर टंग, मतलब मातृभाषा के बारे में है. इट इज़ ओनली टू शो यू कि एक लैंग्वेज कैसे लोगों को कनेक्ट करती है और कैसे लोगों को हमेशा के लिए जोड़ के रखती है इन अ कॉमन हिस्ट्री. ओके, व्हाट हैपन्स इन द लास्ट लेसन? नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट. सर यू लाइक मलिंगा? आई लाइक ऑल क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड. आई लाइक एवरीबडी इन द वर्ल्ड. Guys, please focus. We'll get the PDF to you later, but just focus, please. Okay. So, M Hamill होता है इसमें. प्लॉट कैसे शुरू होता है, किसी को पता है? प्लॉट begins जब फ्रांस लेट हो रहा होता है स्कूल के लिए. Okay. So this is the basic premise of the chapter. We need to understand the feelings of Germany and understand the feelings of M Hamill and who Franz is. So as you can see here, Franz एक honest, sensitive और good observer था. He was one day reluctant to go to school. He was late for school. क्यों? क्योंकि वो बहुत डरता था अपनी टीचर से scold होने के लिए, right? He was fearful of the kind of scoldings he would get from his teacher, right? Why was he fearful? Because he had not learned the rules of participles. Participles are a concept in English. तो उसने क्या किया? उसके बाद बहुत अंदर से एक कल्पना आई कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, much like all of you do, ठीक है? Whatever. He was like, okay, fine. मैं बाहर जाऊंगा, एक ब्राइट डे है, सनी डे है, मैं बर्ड्स को चर्प होते हुए देखूंगा, मैं प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग देखूंगा. तो जब वो टाउन हॉल की तरफ गया, देन ही सॉ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस पिन होते हैं, ये सब हो रहा होता, ये सब हो रहा होता, वो सब हो रहा होता था. वहाँ पे सारी बैड न्यूज़ आती थी क्योंकि वहाँ पे फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था. एज यू नो, फ्रैंको प्रशियन वॉर में ये सब आता था कि उन्होंने बैटल हार दिया, एक ड्राफ्ट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. वहाँ पे एक बंदा था ब्लैकस्मिथ वॉक्टर. ब्लैकस्मिथ वॉक्टर ने बोला, आप इतनी तेज़ मत जाओ, आप फिर भी स्कूल पहुंच जाओगे. सो ही वॉज बेसिकली मेकिंग फन ऑफ दिस गाय, राइट? वट एवर इट इज, ही वेंट टू स्कूल दैट डे डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस. ठीक है, वो वहाँ पे स्कूल गया
तो उसके स्कूल में बहुत सारी कमोशन होती थी. बट देन ही नोटिस दैट हिज स्कूल वॉज क्वाइट. इट वॉज डेड साइलेंट. ही वॉज लाइक दिस. If I'm speaking like this, this is how silent it was. All right. His school was like this. Okay, enough of the drama. वहाँ पे कोई भी साउंड नहीं थी, ना डेस्क की साउंड थी, ना लेसन्स रिपीटिंग इन यूनिजन. जब आप स्कूल में होते हो और आपकी टीचर बोलती है ओके द होल क्लास नीड्स टू रेडी दिस 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 दैट, एक साथ बोलो, लाइक यूर रैपिंग समथिंग ऑन द टेबल, यूर लाइक आई एम हियर. जब आप गुड मॉर्निंग मैम बोलते हो ना ऐसे, दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग समथिंग इन यूनिजन. तो कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे. एम हैमल था विद एन आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. नाउ एम हैमल कौन था? एम हैमल was a devoted and sincere French teacher. He was passionate about French, considered French the most beautiful and the most logical language. He was patriotic and emotional. Okay. On the day of the last lesson, उसका लास्ट लेसन क्यों था अब हम ये समझेंगे. उसने ये सब पहना हुआ था, अ ड्रेस, ग्रीन कोट, फिल शर्ट, ब्ला 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 ब्ला. यू नीड टू नोट दिस बाय द वे. ये एग्जाम में आ सकता है. यू नीड टू नोट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स एम हैमल वाज वेयरिंग, सो मेमोराइज दैट. ओके. उसने ये सब पहना हुआ था. वो चीज़ वो सिर्फ तब पहनता था जब कोई स्पेशल दिन होता था. लेकिन ना उस दिन कोई एनुअल डे था, ना उस दिन कोई स्पोर्ट्स था, नथिंग. इट वॉजंट अ स्पेशल डे पर से. इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल डे. बट एम हैमल नोटिस कि वहाँ पे विलेज पीपल थे, वहाँ पे लोग पीछे बैठे हुए थे जो बहुत बूढ़े थे. एंड फ्रांस वॉज वेरी कन्फ्यूज. ही वॉज लाइक एक नॉर्मल डे पे ये सब कैसा है? एंड दैट वॉज हैपनिंग देयर. बहुत वियर्ड हो गया था, राइट? एंड वाई वॉज दैट हैपनिंग? नाउ विल अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि एक ऑर्डर आया था बर्लिन से, बिकॉज रिमेंबर जर्मनी वॉज कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दिस. बर्लिन से ऑर्डर आया था कि फ्रांस के स्कूलों में, स्पेसिफिकली एल्सेस एंड लोरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रांस में, उधर सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. ठीक है, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. एक फ्रेंच टेरिटरी में जर्मन पढ़ाना. Here the theme of colonialism comes in. Okay, now he started to address his students and his village elders in his last lesson. He started blaming his parents. He was like, जो फ्रेंच पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पेट्रियोटिज्म बिल्कुल नहीं समझाते, और वो खुद को ऊपर भी ब्लेम डालने लग गए. बिकॉज ही प्रेफर टू पुट चिल्ड्रन एट वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स वेयर ही सेंड देम टू वाटर हिज प्लांट्स, ऑलराइट, और gave them a holiday when he wanted to go fishing. So एम हैमल की खुद की गिल्ट थी जो वो recognize कर रहे थे कि उन्होंने बच्चों को फ्रेंच पेट्रियोटिज्म का मतलब नहीं सिखाया, ऑलराइट, एंड दैट वाज हिज कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स. फ्रेंच लैंग्वेज की बात आती है. एम हैमल स्टार्टेड टू से कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है, एंड इट्स अ क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज. And he started to say that German people would themselves laugh one day at their inability to speak French, because in his views, French was more beautiful than German. In fact, according to him, French was the most beautiful language in the world. All right? Now, in his delivery of the last lesson, वो सब कुछ बहुत patience से समझाने लगे. फ्रांस ने ये नोटिस करा. उसको लगता था कि यार एम हैमल तो बड़े खड़ूस टीचर हैं, वो तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ पढ़ाते रहते हैं. दोज वर हिज फीलिंग्स. However, he started to speak like this, explaining everything with such patience. बहुत धीरे धीरे, ठीक है. वो सारे एक लेसन में ही अपनी सारी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता था, ठीक है. अंत के वक्त, when the lecture was ending, he was exactly like this. He tried to speak, but nothing happened. Okay? He tried to speak, but no words could come out of his mouth. So something metaphorically started to choke him. Literally नहीं, किसी ने गला ऐसा नहीं दबाया, but something started to choke him metaphorically. All right? He turned to the blackboard and he wrote, "Vive la France." In that, it means, long live France. विलेज एल्डर्स ने अब ये लास्ट लेसन क्यों अटेंड किया था? टू थैंक एम हैमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस. दे फेल्ट सॉरी फॉर नॉट पेइंग अटेंशन इन स्कूल बिकॉज नाउ their whole language, their whole culture, and their whole education was being destroyed. They attended the last lesson simply to show respect for their country and language. Now, the last lesson for France became a lesson in which वो empathy feel करने लग गए, ठीक है. They started to feel empathy, their students, the elders, France, for the guy M. Hamel, because now M. Hamel was supposed to go with his sisters away from France. They understood M. Hamel, they accepted him with his faults, and the last lesson became the most memorable and the most important lesson for France. Okay? That's the last lesson for you, which is also ironically the first lesson. So if you have any doubts, please quickly put them in the chat box. Otherwise, I will move on to the next one. Please tell me.
A little quick. Yeah, for sure, for sure. I will be a little quick. I'm just starting off the stream now, so करना ही पड़ेगा ये. Will you be sending notes on Telegram? Yeah, for sure. ये सारे notes मैं आपको भेज दूंगा so that you don't have much problems. घंटे लग जाएंगे. हाँ जल्दी कर ही रहा हूँ. ओके, लॉ स्प्रिंग. ओके, लॉ स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम. ऑलराइट, साहिब आलम वाला. साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. दे अर्न मनी बाय रैक पिकिंग. वो सीमापुरी में रहता था और बेयरफुट चलता था. लिविंग कंडीशंस सीमापुरी में क्या थे? वो आउटस्कर्ट्स के दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में थे, येट इट वाज समहाउ वेरी डिस्टेंट फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ. वहाँ पे लोग अपनी लिविंग रैक पिकिंग के थ्रू अर्न करते थे. फूड एंड सर्वाइवल बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन एन आइडेंटिटी. दे वांटेड टू सिंपली फीड देयर स्टमक्स एंड नॉट बॉदर विद एनीथिंग एल्स. गार्बेज टू देम वाज गोल्ड. व्हाई? बिकॉज इट वाज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. उनके पास एक ही तरीका था जीने का, टू सेल गार्बेज एंड कलेक्ट इट. मुकेश क्या था? He was a bangle maker of Firozabad. He worked in high temperature conditions and he dreamt of being a motor mechanic and wanted to break the lineage. मतलब वो चाहता था कि उसका जो फैमिली का ट्रेडिशन है, जिसमें वो एक ऑप्रेसिव जनरल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे उनकी ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है बिकॉज ऑफ द टेरेबल वर्किंग कंडीशंस ऑफ द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली इन सीमापुरी एंड फिरोजाबाद. He was like, okay, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहूंगा, बट he could not. What were the hazards of working in the glass bangle factory? वहाँ पे जो वर्क प्लेस होती थी वो स्मॉल और डिंजी, मतलब बहुत डार्क होती थी. There were long working hours in front of hot furnaces. बहुत तपती गर्मी होती थी because of the furnaces. जो छोटे बच्चे और छोटे लड़कियाँ थी, they used to assist their parents in the dim light of flickering oil lamps. Okay? And their eyes thus became more adjusted to dark than light. वो ज़्यादा अंधेरा देखते थे, उनको रोशनी कभी नहीं दिखती थी. और इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि जब वो रोशनी देखने जाते थे तो उनको ब्लाइंडनेस हो जाती थी. द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग बैंगल्स अफेक्टेड देयर आईज, स्किन एंड हेल्थ. वाई? बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन दिस होल सिस्टम ऑफ ऑपरेशन. How? Because they were exploited by money lenders, police, bureaucrats, politicians. They had a fear of being ill-treated by the police. वो बहुत डरते थे पुलिस से. उनको लगता था, ओ हम तो गरीब हैं, हम एक इंटेंस पॉवर्टी वाले स्टेट में रहते हैं, तो हम कुछ भी नहीं जस्टिस ले पाएंगे. However, that is what stopped them from getting justice in itself. So they continued living in stinky lanes and in overcrowded places with humans and animals. And Mukesh, the bangle maker of Firozabad, never achieved his dream ever, simply because of the oppression that he existed in. Now that's done. Let's move on to Deep Water by William Douglas. Deep Water का मैसेज क्या है? कि impossible कुछ भी नहीं होता. एक टारगेट होता है, हमें उसे अचीव करना है. चाहे हमारे यहाँ कोई भी चैलेंजेस आ जाए, हम लड़ते रहेंगे, हम कभी रुकेंगे नहीं, हम मिल्खा सिंह की तरह भागते रहेंगे, उसेन बोल्ट की तरह भागते रहेंगे. लेसन में क्या होता है? विलियम डगलस का पहला इनकाउंटर होता है वाटर के साथ, और उसी तरफ से उसकी एवर्जन शुरू हो जाती है. एवर्जन का मतलब होता है दूरी, फियर. ऑलराइट, जब वो 3 या 4 साल का था, वो कैलिफोर्निया में गया था अपने पापा के साथ. वहां पे वेव्स आई, वो बहुत सफोकेट हो गया, फ्राइटन हो गया, गिर गया, डर गया. अब उसका ट्रॉमा पैदा हो गया. अब YMCA पूल में क्या हुआ? उसने सोचा, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो स्विमिंग लर्न करनी है, भाड़ में जाए मेरा ट्रॉमा. वो चला गया स्विमिंग लर्न करने YMCA पूल में. वहां पे एक याकीमा पूल था, ठीक है, जो 3 फीट था शैलो एंड पे और 9 फीट वाइड था डीप एंड पे. उसमें वाटर विंग्स थे, तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करने लग गया. लेकिन वहां पे एक बुली आया, ठीक है, उसने बोला, हाँ मैं तो 7 फुट का आदमी हूँ, तू गया है. उसने उसको लिया, फेंक दिया, एंड ही फेल इनटू द डीपर एंड 9 फीट डीप. अब क्या हुआ? द प्लान एंड एफर्ट्स इन वेन, सीरीज ऑफ इमोशंस, दिस इज द थीम. जब वो नीचे गिरा, ही हिट द बॉटम. ही ट्राइड टू मेक अ बिग जंप टू कम टू द सर्फेस बट फेल्ड. नाउ 9 फीट इतना नहीं होता, लाइक आई एम अबाउट 5'11", so like 9 feet would be approximately this much, but it's still not that much. Okay, 9 feet to him, the guy in the water, Douglas, looked like 90. वो पैनिक करने लग गया. He tried to yell but in vain. Dizziness was there with aching lungs and a throbbing head. ये एक futile struggle था, मतलब it was freaking useless. So he gave up all efforts, but somehow by God's grace he was saved. He survived. He made it out, but be careful, he didn't make it out happy. वहाँ पे उसने अपने आप को देखा कि वो एकदम पूल से वापस आ गया. He regained consciousness and he started to vomit. He was feeling weak. He was trembling. तब वो घर चला गया because somehow somebody saved him. However, उस रात वो कुछ नहीं खा पाया. There was something inside his body which was manifesting as fear. He was wobbly in the knees and stick to the stomach. He got scared of water and started avoiding water bodies. Now this became a deeper trauma than his original childhood trauma of water. But जब वो misadventure हुआ YMCA में, उसका trauma इतना खराब हो गया that he started to deprive himself of the joy of fishing trips, boating, swimming, rafting. All right, but he was a strong person. He was like, I won't let this get me down. All right, I will make something of myself. So what did he do? He hired an instructor. 5 दिन
5 दिन एक हफ्ते में, 1 hour a day, एक रोप अटैच करी गई, ब्ला 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 ब्ला. सो द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बेसिकली जस्ट हेल्प्ड हिम ओवरकम बाय डिसएसोसिएटिंग हिम फ्रॉम द फियर. उसने ये कैसे किया? बार बार सेफ्टी गियर दिया, सेफ्टी गियर दिया, सेफ्टी गियर दिया, ये पुली लगाई, ये पुली लगाई, और धीरे धीरे कर करके उसने एक स्विमर बना दिया डगलस के बाद. और वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुआ डगलस आफ्टर लर्निंग हाउ टू स्विम. He went to Lake Wentworth, he dived and swam across the warm lake, and thus he conquered his fear of water. And that was your deep water. Now we're going to go off to The Rat Trap by Selma Lagerlof. The Rat Trap is what you would refer to in modern day language as the Matrix. Okay? How do I join the Telegram link? Okay, मैं बता देता हूँ. रुको मैं इधर दे ही देता हूँ. Telegram is at Grand Cat for notes. Super chat for doubts. Wait, I'll just put this out here. I have PTSD. My ex threw me off. Oh man. Jesus. Take care of yourself, bro. Start a poll. Having fun? There you go. Ask your community. From where can we get the notes? I'll give it on my Telegram after the class. Alright? It's been 21 minutes, right? Yeah. Just give me a moment. We'll move on to the rat trap. Just 1 second, please. Hello, sir. Explain a little about Mukesh. Mukesh Bhabi, description above. Okay. Telegram पे मिलेगा. Please don't spam the group. Please revise the article. I will do that. Telegram, I have pinned it. ऊपर देख लो. William is a top G for sure. Okay, still you'll check. Don't rat trap. Unseen passage. Hairstyle बनाने का tutorial दे दो. यार मेरे natural curls हैं. I'm just gifted that way. But all right, bro. Don't worry. you will look fantastic when you're my age, I guess. Okay. Here we go. Now let's study the rat trap. हिंदी से explain कर रहा हूँ बीच बीच में. अब देखो आपका इंग्लिश का एग्जाम है. अगर आपको प्योर हिंदी में लर्न करना है तो आप जाके कीवर्ड्स दे आर अवेलेबल इन आवर क्लास 12 एनिमेटेड वीडियो प्लेलिस्ट. सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. All right. 6:55 हो रहे हैं, guys. We need to hurry. I'm waiting for the third level. Yeah, we go there. Okay, The Rat Trap by Selma Lagerlof. She's a Swedish author. The Rat Trap is basically like the idea of the Matrix if you've seen the film or if you have, well, been on the internet. So basically, इसमें क्या होता है? This is a story about universality of human goodness. इसका मतलब होता है कि there is some goodness in the world. So basically, एक बंदा होता है जो एक rat trap seller होता है. वो एकदम चोरी करना लग जाता है, फिर उसको एक लड़की मिलती है, उसको प्यार हो जाता है और फिर वो चोरी करना बंद कर देता है. या दैट्स व्हाट हैपेंस. ओके, सो रैट ट्रैप सेलर क्या होता था? उसकी एक पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ होती थी. वो बैग करता रहता था, छोटे छोटे चोरियां करता रहता था और रैट ट्रैप बेचता रहता था. वो उसकी सारी मीन्स थी लाइवलीहुड की. ठीक है, वो मॉरली अपराइट नहीं था क्योंकि वो ये मानता था, उसकी ये फिलॉसफी थी कि पूरा दुनिया एक रैट ट्रैप है. वो रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, टेम्पटेशन फेंकती रहती है और वो बेट होता है. मतलब आपने कुत्ते को चीज़ फेंक दिया या फिर आपने किसी को भी कुछ भी दे दिया उसको प्लेजर फील करवाने के लिए. वहाँ पे आपने एक माउस को दे दिया खाना, आपने उसको लड्डू खिला दिया, आपने एक माउस को लड्डू, और फिर माउस बोलने लग गया, ओ माय गॉड मुझे लड्डू मिल गए, ओ माय गॉड आई एम हैविंग फन. एंड देन वो जाल में आके फंस गया बिकॉज he wanted the pleasure of a laddu. So basically that was his philosophy. And much like rats and dogs, we are offered temptations in life, like whatever you may think about as jobs or 9 to 5s or pleasure principles that is pumped into general pop consciousness through media. And अगर आप उसके विक्टिम बन जाते हो तो आप ट्रैप हो जाते हो. ठीक है, तो वो लोगों की एडवांटेज लेने लग गया था of opportunities, like he robbed the guy, the old crofter, right? And the person who he stole 30 kronas from, and he did not even spare an old crofter whom he stole 30 kronas from, as I mentioned. Now, उसके अंदर एक inherent goodness थी. वो कैसे बाहर आई? Through the kindness and compassion shown by Edla, whom he supposedly fell in love with. All right? The world is a rat trap. Yes, true. Jen, okay. Sir, प्यार का तो कहीं mention ही नहीं है. See, in literature, not everything is mentioned. Okay, there is a certain subtext.
and that's open to interpretation. Okay, Matrix is a rat trap. Yeah, basically, yeah, it is 100% the same thing. English बहुत अच्छी है हमारी. हाँ भाई, you all are my students. So you left important points. Dude, I'm telling you, this is a quick revision. If you want a detailed explanation, please go to our playlist, watch our animated videos on our channel. That'll help you 100%. Okay, now ओल्ड क्रॉफ्टर की एक लिटिल ग्रे कॉटेज थी. वो एक ओल्ड पर्सन था, उसका ना कोई बीवी थी ना कोई बच्चे थे. वो बहुत लोनली इंसान था. उसका मन होता था वो किसी से बात कर ले और बहुत खुश हो जाता था. ही वॉज अ सिंपल जेनरस मैन. वो पॉरेज सर्व करता था. ही ऑफर्ड हिम अ बिग स्लाइस फ्रॉम द टोबैको रोल. ही प्लेड कार्ड्स विद द रैट ट्रैप सेलर एंड ही टोल्ड हिम अबाउट हिज प्रॉस्परस पास्ट, जहां पे वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता था, बट सडनली ही लॉस्ट देम. नाउ ही वॉज प्राउड ऑफ हिज काउ विच सपोर्ट्स हिम एंड ही ओनली अर्न 30 kroners. He showed the rat trap seller the pouch hung at the window frame जहां पे वो पैसे रखता था. और उसने क्या किया? What did the rat trap seller do? He stole them. Very good. Now the most important character, एडला विलियमसन. एडला एक काइंड कंपैशनेट हम्बल इंसान थी जिसने रैट ट्रैप सेलर को चेंज किया. शी वॉज अ कीन ऑब्जर्वर. शी परसुएडेड द सेलर टू अकम्पनी हर एंड assured him that they could leave the house as freely as he entered. जो रैट ट्रैप सेलर था, उसके जो एडला के फादर थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था. सो शी रिक्वेस्टेड हर फादर टू लेट द पेडलर स्टे इवन आफ्टर दे रियलाइज द मिस्टेक दे मेड इन रिकग्नाइजिंग द पेडलर, बिकॉज द पर्सन इन क्वेश्चन स्टार्टेड टू बिलीव कि वो उनका एक ओल्ड सोल्जर था. ओके, नाउ एडला रिसीव्स अ गिफ्ट of a rat trap with a letter and 30 kroners to be returned to the old crofter. So Edla became the reason for the rat trap seller's reformation. In a subtle way, उसने rat trap seller के अंदर से जो एक अच्छी यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमन गुडनेस थी वो बाहर निकाली. एंड शी लिबरेटेड हिम, शी फ्रीड हिम फ्रॉम द मैट्रिक्स दैट ही सो प्रोफेसाइज्ड कि जो दुनिया एक रैट ट्रैप है, उसकी जो एक बहुत इनहेरेंट फिलोसफी थी, शी मेड हिम detach from that completely. Now Iron Master, he's another important character here. The Iron Master was a successful businessman. Why? Because he used to supply good quality iron products. पहले वो एक arrowing officer होता था, okay? But he was, typically masculine. वो बहुत hasty होता था. He was a bit violent. He was haughty in his temperament, okay? उसने क्या किया? He mistook the rat trap seller for an old acquaintance. Von Stahl. आप रिमेंबर करोगे चैप्टर के एंड में when he returns the 30 kroners, the rat trap seller, वो अपना लेटर साइन भी करता है as Captain Von Stahl. So this becomes a very important seminal piece in the text. He invited him to spend Christmas with him. Now, when he realized कि ये rat trap seller Von Stahl नहीं है, he threatened the peddler to be headed over to the sheriff. However, agreed to let him stay when Edla intervened. Again, important point here because Edla became the reason for the rat trap seller's reformation. Then he rebuked Edla for letting a thief stay in the house when the real identity of peddler was revealed, because he went to the church and he realized कि oh ये तो चोर है. But despite all of that, the story ended on a positive note when Emma was able to reform the rat trap seller, and that was the premise of this chapter. Peddler thinks he is the thinker. That's true. Central idea of any poem. Just watch our videos, man. Your voice, sir, thank you very much. Your voice is awesome. Thank you. I really appreciate that. Toppers think they can get rich by studying Matrix. Recognizes him as Nils Olof, yeah. Yes, he does recognize himself as Nils Olof. I will send you the notes, don't worry. All right. I can't send the notes right now. I'll send it after. Negi, bro. All right. Now let us move to Indigo, okay? I am just going to tell you, Indigo is a very factual chapter. I have an animated summary for Indigo. Okay, I'm going to try my best to cover this, but it will take time. So we're going to skip Indigo for now. I would recommend you to visit our channel. वहाँ पे Indigo की animated summary है जिसमें सारी details mentioned हैं. वहाँ से पढ़ लीजिए. This is a bit factual. We'll skip it. For now, okay? Now we'll go to this thing called Poets and Pancakes, जो लोग कहते हैं कि उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. तो ये हम कर लेते हैं. अंग्रेजी बीट टॉपर्स. सर यू कैन बिकम एन आरजे. या थैंक यू. इंडिगो का रैप गोट कर दो. पोम्स आर हार्डर देन स्टोरीज. डिपेंड्स. पोम्स कब स्टार्ट होंगी? सून इनफ. Just be a little bit patient. अरे hairstyle, thank you. How much did you stole? It was 30 kroner. Can you tell that how can we learn the central idea? I'm telling you, someone is spamming Telegram. Thank you for telling me that. I'll just remove him or her. Okay, what the hell is this, man? Thank you very much.
for informing me. If there's any other spam on the Telegram group, please let me know. I will remove that ASAP. Will you be teaching the writing section? No. You can watch it on our YouTube channel. Okay, let's go on to Poets and Pancakes. Your voice is lit. Thank you very much. Sorry, समझ ही नहीं आती Poets and Pancakes की. अरे कोई नहीं समझते हैं. Okay, so Poets and Pancakes में क्या होता था? एक Gemini Studios होता था मद्रास में. उसका एक फाउंडर था SS वसन, SSV, SS वसन. उसने बहुत ही ज़्यादा टाइम दे दिया था अपना टू एन अनप्रेडिक्टेबल मूवी बिजनेस विच वॉज एग्जिस्टिंग इन इंडिया एट दैट टाइम. पोएट्स एंड पैनकेक्स. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जेमिनाई स्टूडियोज. जेमिनाई स्टूडियोज की मेकअप डिपार्टमेंट. ओके, वहां पे एक ब्रांड होता था पैनकेक. इट वॉज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटीरियल. वहां पे जेमिनाई स्टूडियोज में ये ट्रक लोड्स में आता था, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटीज में आता था. वहां पे क्या होता था, जो एवरेज लुकिंग आर्टिस्ट होते थे उन्हें हिडियस लुकिंग मॉन्स्टर्स बना दिया जाता था, क्योंकि वहां पे एक ट्रेंड होता था कि एक इंसान को इतना मेकअप लगा दो कि उसके नेचुरल लुक्स बिल्कुल हाइड हो जाएं. बेसिकली उनको एक मिठाई की दुकान बना दो. ठीक है, वहां पे सारी शूटिंग मोस्टली इंडोर्स होती थी. वहां पे सेट चाहिए होता था, स्टूडियो लाइट्स चाहिए होती थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट, because of so many studio lights, the pores on the face of the actors had to be closed with this thing that we call pancake. As I said, वहाँ पे भी ट्रेंड होता था. मेकअप रूम जेमिनी स्टूडियोज के अंदर क्या होता था? It was in the upstairs of a building which was believed to have been Robert Clive's stable. It looked like a hair cutting salon, क्योंकि वहाँ पे बहुत large mirrors थे और वहाँ पे बहुत incandescent, मतलब बहुत dim lights थी जो बहुत intense heat cause करती थी because of their warm texture. Basically, it was a miserable experience. नेशनल इंटीग्रेशन की बात कैसे आती है इधर? बिकॉज डिस्पाइट बीइंग इन मद्रास, इट वॉज हेडेड बाय बंगाली बट सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन. बंगाली के बाद एक महाराष्ट्रियन आ गया टू लीड इट, एंड that header was assisted by a Dharwar Kannadiga, which is an ethnicity in India. There was also an Andhra there. There was a Madras Indian Christian, and Anglo-Burmese and local Tamils. वहाँ पे hierarchy क्या थी? There was a chief makeup man for the hero and heroine. There was a senior assistant for second hero and heroine, and then there was an office boy for the rest of the crowd. Okay? Now office boy क्या था? He wasn't a boy. वो एक 40 साल का आदमी था. Okay? He joined the studio in hopes of becoming a star, director, script और lyric writer. उसके बहुत ambitions थे, but he kept getting short-handed. तो वो बहुत frustrated रहता था और वो कोठा मुंगलम सब्बू को अपने सारे faults और shortcomings के बारे में blame पकड़ा देता था. Okay? He suffered a life of regret, neglect and anonymity. Okay? Also, अगर तुम्हें ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह भी लर्न करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे चैनल पे एनिमेटेड वीडियोस हैं ऑफ ऑल चैप्टर्स. आप खाली को इंग्लिश पढ़ा सकते हो? नो, आई कैन टीच अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. कमिंग सून दो. जस्टिफाई द टाइटल किसके चैप्टर में आ सकता है? द एनिमी एंड द थर्ड लेवल. या द एनिमी एंड द थर्ड लेवल, आई थिंक उसमें आ सकता है. करिश्मा, दे मेक पीपल अगली. या मैन, इट्स क्वाइट सैड. एनीवे, ओके, स्टोरी डिपार्टमेंट, कोठा मंगलम सब्बू. ही वॉज द नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो. ओके, उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल इन स्पाइट ऑफ फेलियर. सो ही वॉज अ स्टोइक एंड एन इमोशनली स्टेबल मैन हु वॉज एबल टू contain his emotions and fake smiles. उसकी loyalty थी, creativity थी, and he had a talent just so he could serve his boss. He was tailor-made so films, okay? वो ऐसा इंसान था जो films के लिए ही बना था, and he made filmmaking very easy with Subbu, okay? And all of that happened. He was a good poet. He could write poems of a higher order. मतलब he could basically just come up with poems like this. He chose to write for the masses. Basically, choosing to write for the masses means that you are writing something which everybody would like, all right? And apart from that, when you write for a specific audience, that's called writing for a niche, okay? He was a novelist, according to Thilana Mohanabal, and he created lifelike characters. Now, there was also a legal advisor जो हर बार पैंट शर्ट टाई कोट पहनता था. बाकी सारे लोग इंडियन ड्रेस पहनते थे, which was Gandhian in nature, like a खादी, धोती and shirt. जो लीगल एडवाइजर था वो हमेशा अकेला रहता था, and he looked helpless. So he was a man of cold logic in a crowd of dreamers. That means that he was an analytical person in an artistic environment. However, he was a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites, because Gandhiites wore Khadi and Khadiites obviously wore Khadi. But he used to wear pant, shirt, tie, coat, western dresses. He unwittingly ruined the character of a talented actress when उसने एक basically चीज़ को record कर दिया था, when the talented actress basically just lost her calm and started to have angry bouts. आप इसमें टाइम वेस्ट मत करो. नहीं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ सबको.
रोड साइड स्टैंड डिटेल में करवा दो. ओके, बाय द एंड ऑफ द डे आई माइट बी एबल टू डू दैट. राइटिंग सेक्शन यार, उसके वीडियोस डले हुए हैं हमारे उस पर. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द ऑथर अशोका मित्रन, जिसने ये स्टोरी लिखी है. वो हमेशा न्यूज़पेपर के साथ रहता था. जो भी था वो उसके क्यूबिकल के अंदर आ जाता था टू गिव हिम वर्क. सो बेसिकली ही वाज अ वॉक ओवर, अ पुश मैन. ओके, ऑफिस बॉय चाहता था कि वो अशोका मित्रन को इंप्रेस करे और पोम सुनाए. But Ashoka Mitram only wished for crowd shooting to be saved from epics of the office boy. So basically, office boy बहुत clingy होता था Ashoka Mitran के साथ, but Ashoka Mitran did not give a single shh. Now, the arrival of Frank Buckman's Moral Rearmament Army, the MRA. So what was this? It was like a sort of anti-communism movement that visited Gemini Studios in 1952. वहाँ पे 200 लोग होते थे, which belonged to at least 20 nationalities. उन्होंने 2 plays produce किए थे, Jotham Valley and Forgotten Factor. उनके सारे प्लेस में एक सिंपल मैसेज होता था. बहुत बढ़िया कॉस्ट्यूम्स होती थी. वहाँ पे सनराइज और सनसेट के सीन्स तमिल ड्रामेटिस्ट ने बहुत बार इमिटेट किए. द सीन्स वर प्रेजेंटेड ऑन अ बेस स्टेज विद वाइट बैकग्राउंड्स एंड फ्लूट म्यूजिक. डरा डरा. जेमिनाई फैमिली, जो जेमिनाई स्टूडियोज की फैमिली थी जिसमें 600 एम्प्लॉइज थे, दैट वाज हाईली इंप्रेस्ड. हाउएवर इट कुड स्टिल नॉट इन्फ्लुएंस द आउटलुक ऑफ द जेमिनाई बॉसेस. एंड देन एन इंग्लिशमैन केम, स्टीफन स्पेंडर. Nobody knew whether this Englishman was a poet or an editor. कई लोग बोलते थे कि द हिंदू की वजह से ये एडिटर हो सकता है, which was a recent newspaper launched during that time. The boss welcomed and led a long speech on freedom and democracy. And the Englishman spoke with an accent that was difficult to understand because he was speaking to a silent and dazed audience that could not understand that he's from England, because he was saying that he's Tommy Shelby of the Peaky Blinders. And that happened. But then the mystery started to become apparent. Okay, it became solved because there was a notice in the Hindu, the newspaper that we just spoke of. There was a short story contest called The Encounter. Author British Council Library गया, अशोका मित्रन. वहाँ पे उसे The Encounter के और कॉपीज मिली. So the editor of The Encounter was Steve. Series by far, but I hope I was able to make it easier for you. And if you still do not understand, again, we have notes available for you after the class. Also, we have animated summaries in our channel. Said it true, they did not know the actual meaning of communism, but they still opposed him. Yeah, it is. The studio fam, this man indeed got the trip. Okay. Sir going nuts gently to the end of the earth. Man, that's also a chapter that we'll have to look at. What has someone's cause to do with power? This is support material. Yes, it is. Sir, आपने रोड साइड स्टैंड की समरी नहीं डाली. हाँ, नहीं डाली. Apologies for that. Is it true? Best of luck. Thank you very much. Stream को channel पे upload कर देना. All right, I'll do that. Pop out chat, participants, community moderation. Okay, if everything is fine, then we might proceed with the next one. PDF कहाँ मिलेगी? After this class. मैं ऐसे पिन करता हूँ. 20 ने पूछ लिया. ओके ब्रो, दिस मैन कैन रिजर्व. थैंक्स मैन. आप स्ट्रीम को अपलोड करना. हाँ, कर दूंगा. आई विल डू दैट. यूट्यूब फुल टाइम? नो, नॉट येट. आई हैव अदर परसूट्स इन लाइफ. आई कांट रियली डू एनीथिंग फुल टाइम, बट या आई माइट गो हार्डर पर से. इट इज़ डिफिकल्ट. आई एग्री विद यू दैट. The interview by Christopher Sylvester. Okay, so part 1 is extremely easy. So interview became a commonplace of journalism क्योंकि वहाँ पे सारे opinions डिफरेंटली आते थे. एक बंदा जिसकी इंटरव्यू ली जा रही है और दूसरा बंदा जिसकी इंटरव्यू ली जा रही है वो अलग होंगे. कई लोग कहते थे कि इंटरव्यूज़ एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, अ सोर्स ऑफ ट्रूथ है और एक प्रैक्टिस है. लेकिन कई लोग कहते थे कि इंटरव्यू एक अनवारंटेड इंट्रूजन है, मतलब आप बेफालतू में किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाज करने की कोशिश कर रहे हो और उनकी पर्सनैलिटी को कम कर रहे हो. एस नाइपॉल था वो बंदा, कहता था कि सम पीपल आर वोंडेड बाय इंटरव्यूज़, उनको बहुत दर्द होता है इंटरव्यूज़ से, एंड इट मेक्स देम लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स. लुई कैरल कभी भी अपने आप को अलाउ नहीं किया टू बी इंटरव्यूड क्योंकि ही हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर. रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि एन इंटरव्यू इज एन इमोरल क्राइम, इट इज एन असॉल्ट दैट मेरिट्स पनिशमेंट. G. Wells referred to interviewing to be an ordeal. Saul Bellow described interviews like thumbprints on his windpipe. मतलब it had a choking metaphorical nature. But despite the drawbacks, interview emerged as a very popular medium
and in the words of this, a supremely serviceable medium of communication. Why? Because interview से एक vivid impression आ जाती है about our contemporaries, and the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. Because see, सपोज आपकी इंटरव्यू हो रही है, जो भी आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, एंड यू हैव टू आंसर इट, बिकॉज अदरवाइज you'll be made fun of for walking out of an interview. So they have unprecedented power, unlike any other point in history. Sir, explain the last scene of Poets and Pancakes is messy. Go and check our animated video out, bro. Keep talking, I'm almost done. Oh my god, dude. You're gonna make me crack up, dude. What the hell is this? The interview. Yeah, we're getting to the interview. We're here only. I'm gonna go touch some grass. You need that, bro. Like a blade of grass, want sunlight. Okay, I'm not gonna rap here. Alright, part 2. So the part 2 of this chapter is an extract from an interview of Umberto Eco, interviewed by Mukund Padmanabhan of The Hindu. Umberto Eco was a professor. उसकी बहुत बड़ी reputation थी as a scholar because of his work on semiotics, literary interpretation and medieval aesthetics. That was all before he turned to writing literary fiction. Okay? उनको एक प्रोमिनेंस तब मिली when he wrote The Name of the Rose. Okay? उस इंटरव्यू में एको ने शेयर किया about his idea of empty spaces in our lives, just like जो एटम में होते हैं, which he calls interstices. So basically जब आप suppose you're walking to the metro station, that's an interstice. You're in an elevator, you're waiting for it to go up, that's an interstice. और वो चाहता था, ये उनका मैसेज ये भी था कि इस interstices में अगर इंसान काम करने लग जाए तो it would become a very very beautiful thing for that person, because he would be able to, or they would be able to do way more work. Okay, we need to make use of these empty spaces to work. एम्बेर्तो के जो एसेज होते थे, जो लिटरेरी काम नहीं, जो उसके एकेडमिक काम होता था, they were very scholarly and very narrative. And Umberto Eco also studies in literary theory. Okay, so that's an additional information you did not need to know. Okay, he liked to be identified more as a university professor who writes novels, not as a novelist who was a university professor. जो Eco की Name of the Rose थी, वो एक बहुत serious novel थी. It was a definite literary work, not academic, a literary work. उसमें क्या क्या themes explore हुई थी? Metaphysics, theology, medieval history, and it had a mass audience. It sold massively because it dealt with the medieval past. However, he still felt कि ये novel है, अगर वो 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी जाती, so it wouldn't have done as well as it did. So basically he admitted that his success in the literature realm was definitely due to luck. Journey to the End chapter में will they ask all the small details? Unlikely. Also, I thought it's computerized voice in your videos. Not at all, man. This man is a menace to the CV. Do you like anime? Yeah, I love anime. उस वीडियो से भी समझ नहीं आया. Man, that's the best I can do. Yeah. खुद पढ़ लो. Journey to the End chapter में will they ask, your voice is calming, thank you. Going to places दिमाग खाता है. We will do that, don't worry. Just give me a moment. Thank you very much. I am really glad you understood the indigo through our animated chapter. Most important chapter कोई भी नहीं है. Your favorite anime, man? Probably, I mean, apart from Dragon Ball, because I grew up on Dragon Ball, I would say Death Note. Yeah, Death Note, or I like Bleach. I like Attack on Titan. I like Tokyo Ghoul. Have you watched Breaking Bad? I have. Yeah, I have. बिना हाली वाला कमेंट देख रहे हैं. Everyone chilling at this point. लगाओ. Naruto? No, I haven't watched Naruto. I have to. Bro, I know what you're referring to. Don't say that. How long the revision will go? क्योंकि नेट भराना होगा. मुझे नहीं पता यार. मतलब we're almost done with कौन सा है ये? Is this? Yeah, we're almost done with the prose. Just have Going Places and Journey to the End of the Earth. उसके बाद poetry शुरू कर देंगे, and then Vistas वाले chapters भी हैं. So, Going Places के बाद we have poetry, and then we have the chapters from Vistas. So, I guess it will take another hour because the poems are very, very, very short. Have you watched? Yeah, I have. You has real. 2023 batch is the most relaxed. I know that. Your hair is real. Yes, it is. See, it's real. I don't know why people keep asking me that. Anime बाद में पहले chapter. हाँ कर रहे हैं. बस बीच में थोड़ा break दे देते हैं. Okay, Going Places by A.R. Barton. This is about hero worship. Hero worship basically हम इंडिया में देखते ही हैं.
हीरो वर्शिप बेसिकली वेयर यू अटैच टू मच इंपॉर्टेंस टू अ पब्लिक फिगर, ओके, और वो बहुत अडोलेसेंट लोग करते हैं, लाइक टीन एज पीपल डिड टू जस्टिन बीबर एंड One Direction back in the day. That was hero worship, or like people nowadays do with politicians or actors. Like I've seen a lot of people obsessed with Zayn Malik or Harry Styles, even today. So it's like that. So basically, this chapter talks about illusions and hero worship. Now, what do we need to remember? All right, I'm just going to cover this very short. सोफी की एम्बिशन होती थी कि वो ये करे वो करे, एक्ट्रेस बने, यहाँ जाए, वो करे ये करे, और उसकी ये अनरियलिस्टिक ड्रीम होती थी बेसिकली. वन ऑफ हर अनरियलिस्टिक ड्रीम्स वॉज हर डिज़ायर टू बी लाइक, ओ मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं एक बुटीक चलाऊंगी. शी वॉन्टेड टू अर्न मनी बाय बिकमिंग अ मैनेजर, एन एक्ट्रेस और इवन अ फैशन डिजाइनर, बट शी यूज टू कम फ्रॉम अ वीक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. उसके ब्रदर की स्टोरी भी याद करना आप, जो वो मोटर बाइक रिपेयर कर रहा होता है. उसकी एक फ्रेंड थी जैंसी, जो चाहती थी कि सोफी जैसी भी है, जैसी भी कितनी भी आइडियलिस्टिक बॉर्डर लाइन डिल्यूजनल बंदी है, वो फिर भी चाहती थी कि ये मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये बस खुश रहे. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जैंसी वॉज अ रियलिस्टिक पर्सन. शी वॉज डाउन टू अर्थ, वेयर एज Sophie was almost schizophrenic. She used to believe in anything. But due to that, Sophie also could not keep pieces of information or secrets to herself. Sophie के फादर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग मैन थे. उनको फुटबॉल देखने का बहुत शौक था, और ये जो सोफी के इमेजिनरी पैरानॉइड डिल्यूजनल डिजायर्स होते थे, वो बिल्कुल नहीं मानते थे, इवन दो सोफी ट्राइड रिपीटेडली टू मेक हर फादर बिलीव इन वट एवर शी स्टार्टेड टू से. सोफी का एक भाई था जियोफ नाम के, वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक था, बहुत कम बोलता था, लेकिन सोफी बहुत ज़्यादा उसे ट्रस्ट करती थी और अपने सीक्रेट्स उसके साथ शेयर कर लेती थी. ओके, सोफी लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन फैंटेसी. ऑल राइट, वाई? बिकॉज सोफी वॉज fond of hero worshipping and fantasizing, as we mentioned earlier. सोफी का हीरो इधर एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर था जिसका नाम था डैनी केसी. ओके, डैनी केसी. डैनी केसी के प्रति उसका एक सपना था कि वो उसे एक दिन मिले. शी वॉज obsessed about meeting him. She made up stories about her meeting, about her meeting with him. वो सोचने लगे, ओ बुटीक में आएगा, मेरे से पूछेगा, मेरे से इंटरेक्शन करेगा, he'll ask me out, we'll do this, we'll do that. और वो उसके बारे में इतना सोचने लग गई that she started to believe that her imagination was real, but nobody believed her. She felt disappointed. And one day she faked an whole encounter with him and started to tell everybody, देखो उसने मुझे autograph दिया, मैं उससे मिल के आई. But in reality, she never met Danny Casey. She only saw him at a football match. But in her head, she met Danny Casey. So basically, the story tries to tell you that she lived in a world of her own. She lived in a world of dreams. However, she basically deluded herself into believing that she met Danny Casey, when in reality they never met. And the closest that Sophie got to seeing Danny Casey was at the football match at the end. And that was going places. And with that, we are done with poetic devices. No, not poetic devices. We're going to start poetry. I'm sorry. We're done with going places and we're done with flamingo. Yeah, flamingo. Any questions? Any questions? Oh my god. VJ Gamer, you're my favorite person right now. She was also immature. Yeah, of course. वो autograph नहीं लेती. हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, दिमाग में it's a delusion. Favorite singer? I mean, depends which genre. Small rap. Is there any need to worry about English exam? Absolutely not. Real voice? Yeah, I'm speaking like this. I can do something like this if you want me to speak in a fake voice, but this is my real voice. Okay, guys, tell me if you can see me. I just disappeared for a minute. Can you see me? Can you see my webcam? Can you see my webcam? Tell me. You are... She imagined, आपका माइक बहुत अच्छा है, थोड़ा ASMR दे दो. Okay. दे रहा हूँ.
Lamau. Okay. Yeah, anyway. I just needed to do something, but I am back. Hello. Hello, hello, hello. Wait, wait, wait. Don't go. Do not go. Do not go. I do not want you to go. Please don't. Don't. I have abandonment issues. Hello, hello. Delhi? Yes. Super chat enable karo. How do you enable super chat? How do you do that? Can anybody help me? How do you enable super chats? मैं देख लेता हूँ कितने आएंगे सबके अप्रॉक्स भाई 100 आएंगे. हाउ टू अटेम्प्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. Enable super chat. Aren't super chats available? I'm here for the voice. Notes are for nerds. Lamao. You look like the weekend. Thank you. हाँ हाँ कर देंगे यार. तुम्हें नोट्स किया है तो तुम रुक जाओ यार. मिल जाएंगे तुम्हें. Lamao. Quit fooling with me. Shampoo कौन सा डालते हो? Actually, I think shampoos are a scam. But okay. Are super chats enabled? हाँ वो तो मुझे पता है सेटिंग में करते हैं बट मेरे को मिल नहीं रही. देख लेते हैं वैसे. Let me try. Settings. Super chat. Enabled तो है यार. इसमें नहीं आ रही क्या तुमको? We don't need degree, we need to get rich. Not replying to your questions. What question do you have, Lavanya? I only call you when it's half past 5. The only time that I'll be by your side. यार सुपर चैट ऑन तो है. It is on. Supers get started. Accept. Okay. Yeah. Okay. I'm just turning on super chat, guys. Just wait a minute. सर आपका फुल नेम क्या है? कुछ भी नहीं है. YouTube स्टूडियो. सर इंडिगो पढ़ा दो. द वीकेंड लाइट. लमाओ. प्रिपरेशन वीक है तो यार मेरे सारे वीडियोस देख लो. सुपर चैट्स. ओके, आई हैव enabled super chats. If anybody wants to send me a super chat like to test, please feel free to do that. The screen is so blurred. Is it? Yeah, I'm proceeding. Just give me 1 minute. It's getting too long. Calm down, guys. Nobody's charging you anything. Calm down. It's all right. Eminem cover, please. क्या था बोल रही? I could swallow a bottle of alcohol and I feel like Godzilla, but I hit the deck like a cardinal. My hoes walking around a party. In which section we start so we get extra time, whatever you want. A, B, C or C, B, A. Just follow this. Either one works. Hi, can you please share the video with everybody? Thank you. Okay. If you guys want to super chat, you can super chat. मैं गरीब हूँ. तुम हो? कोई नहीं. You'll become rich someday. Your animation video is amazing. Thank you. Sir, पढ़ा दो. Okay, okay. Sing No Love. That's one of my favorite songs, bro. Age? I am ageless. Venom. Okay. यार मैं बहुत ADHD हूँ. Sorry. Getting back to this. Wait. Okay. Here we go. Why Douglas called Roosevelt? Damn, bro is ageless. Time management. Just use your reading time for unseen passage. That will save you a lot of time. Okay? Fine. Now मैं आपको एक basic overview दे रहा हूँ of poems. भाई तुम Kendrick Lamar सुनते हो? हाँ बिल्कुल सुनता हूँ यार. To Pimp a Butterfly is one of my favorite albums. Anyway, okay. Poetic devices. Now, simile क्या होती है? एक comparative
पोएटिक डिवाइस होती है जो बहुत डिस्टिंक्टिव थिंग्स होती हैं उनको कंपेयर करने में, लाइक और एज अ लेट विंटर्स मून, एज का यूसेज हो रहा है और लाइक का यूसेज हो रहा है, दैट इज सिमिली. मेटाफर क्या होती है? एक फिगर ऑफ स्पीच इन विच एक टर्म अप्लाई होता है टू समथिंग इन विच इट इज नॉट लिटरली एप्लीकेबल टू सजेस्ट अ रिजेम्बलेंस. एग्जाम्पल, गस्टी वेव्स. वेव्स गस्टी नहीं होती, दे आर वेरी सेपरेट. सो that's called a metaphor where something else is used to represent something else, and that's a metaphorical thing. Repetition क्या होती है ये तो आप समझ ही सकते हो, far far. Alliteration क्या होती है? where the same letter or sound at the beginning of words are chosen to be close together. Greedy good doers. Good. Okay, greedy good. Alright. Hyperbole क्या होती है? एक intentional exaggeration होती है. जैसे I read a million books this summer. ठीक है, जैसे आप बोल दो, oh I finished every chapter in the world, something like that. Is my hair real? Yes. ओके ब्रो, आप तो इज योर हेयर रियल? यस. ओके फाइन. हाइपरबली हो गई. पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? जब एक एट्रीब्यूशन दे दी जाती है ऑफ अ पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, जैसे पैथेटिकली प्लेड. ओके, और या फिर आपने इस बॉटल को बोल दिया दिस बॉटल क्राइड. दिस बॉटल इज नॉट ह्यूमन बट यू स्टिल गिव इट अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट इज पर्सोनिफिकेशन. ऑक्सीमोरन क्या होती है? कॉन्ट्रोडिक्शन होती है. जैसे एक बेनिफिशिएंट बीस, बीस तो वाइल्ड होते हैं तो वो बेनिफिशिएंट कैसे हो सकते हैं? सो दैट इज एन ऑक्सीमोरन. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ नाउन टू व्हिच इट बिलोंग्स टू अ noun with which it fits only grammatically, like selfish cars. How can cars be selfish? How can a bottle be selfless? Something like that. All right. Imagery क्या होती है? जब एक scene, thing और idea ऐसे describe की जाती है, आप खुद उसको sense करना शुरू कर देते हो. Like, oh, I could feel the ice cream dripping from his eyes and they started to appear like blood which was rushing down his veins. So that's imagery, because when I said this you could easily understand that. Symbolism क्या होता है? Where एक object, figure या event use किया जाता है to basically symbolize something, to give it a broader message. Like wedding band in the poem Aunt Jennifer's Tigers basically represents the aunt's struggle against patriarchy. All right, fine, great. Use coconut oil? No. Curly top hairstyle name? Oh, this is like curly bangs with longer sides and longer back. So it's a mullet plus bangs. So basically it's Jack Harlow plus Kid Leroy. Okay, now we're going to move on to the poems. Guys, calm down. We're just moving on to the poems. So basically, Mother at 66 is the first poem. Mother at 66 was written by Kamla Das. So Kamla Das wanted to write about how she is experiencing her mother becoming old. And you have to understand one thing about Kamla Das. If you move on to, sir, extract वाले questions सारे मार्क्स खा जाते. हाँ, ये सब तो है भाई, ये तो होना ही है. Unless and until you are very, very, very up to date with your reading, it will cut a lot of marks. So, guys, shampoo only one time in a week, yes. Aunt Jennifer husband was, oh my god, I like your hairstyle. Thank you. Not Malinga hairstyle, bro. Okay. All right. So, Mother at 66 by Kamla Das was about the plight of patriarchy and the plight of aging. Okay. Now, in the poem Mother at 66, the poet and the poet's mother is back on their way to Cochin, their hometown, and the poet takes a look at her mother. वो देखती है कि उनकी जो माँ है वो बहुत एक weak नज़रिए से ज़िंदगी जीने लग गई हैं. She is not only weak in her perspective, she is weak in her energy and life. So she sees that Kamla Das's mother is aging, उनकी health बहुत नीचे जा रही है, and Kamla Das started fearing losing her. And that caused the poet Kamla Das a lot of pain. And ये सारी thoughts तो किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा होंगी. So she started to divert her mind from such thoughts. So she started looking outside. She found the trees running. Okay, remember poetic device है इधर. She started finding the trees running because car चल रही थी तो उन्हें लग रहा था कि trees भाग रहे हैं. The young children spilling like peas out of a pod or rushing out of their homes. तो जो poet की mother का face था, it symbolized frailty, मतलब weakness, dullness and inactivity, whereas merry children and the young trees symbolize vigor, energy, zeal and joy. तो इधर contrast का use किया गया है. All right? या मेरे बालों के बारे में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं. Okay, fine, whatever. All right? So here a contrast is being made from the poet's mother's face and the youth of the children and the trees, which represents life. So just like एक late winter's moon अपनी magnificence of beauty खो देता है when it gets covered with fog, similarly कमला दास की mother भी अपना youthful look, vitality और charm खो चुकी हैं because she has aged. Understood? Okay? जब airport पे वो पहुंचते हैं,
Then she realizes while parting from her mother that she has a deep sense of fear of loss. All right, so the poet just smiles and smiles and smiles and smiles. Remember, Mother at 66 by Kamala Das is written in the format of stream of consciousness. Stream of consciousness basically ये होती है कि free verse, हाँ मतलब, but we have to call it stream of consciousness. Stream of consciousness is a form of poetry and writing where you just write whatever's coming into your head. All right, and that's how this poem has been written. So she basically started to reassure herself and her mother that all is well, because she wanted to hide her fear. And that's the premise of this particular poem. All right, the poetic devices are here. If you want a detailed summary of this poem, also the poetic devices, you can go ahead and check out our video on poetic devices and this whole, this whole poem in general. Room tour मिलेगा, बाद में दे देंगे यार, कोई नहीं. Is it only enough to listen to lectures? It's not enough. I think it will get you 80% or 90%. I would recommend you to read the poems and the chapters. Sir, गुस्सा कैसे होते हो आप? अरे गुस्सा नहीं होता. You're the coolest teacher. Thank you. Sir, आप 25 साल के हो. मुझे नहीं पता मैं कितने साल का हूँ. I'm ageless. I said that. How can we get this notes? I'll put it on the Telegram group soon enough. Sir, if you only read moral of the story of each chapter. No, you cannot. You cannot. Room tour बाद में दे देंगे यार. अभी okay, yeah. सर, जब सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो हमसे बात करना, मैं साथ में बैठूंगा चैट में, ठीक है? All right. All right. Elementary school नहीं है आपके में? Yes, I know that. So, keeping quiet. You guys have Keeping Quiet, A Thing of Beauty, Roadside Stand, and Aunt Jennifer's Tigers, right? Yeah. What was the plight of Mukesh's father? Read about how every member of his family was in just one particular profession. Okay. Sir, कौन से स्टेट से हो? मैं स्टेट से हूँ ही नहीं. There's some entity who teaches me English. And for doubts, Telegram at... हाँ मुझे पता है. Gonna cat for... कौन से स्टेट से हो? As I said, किसी स्टेट से नहीं हूँ मैं. I am stateless. क्या आप बात करोगे मेरे से इंस्टा पर? Jesus. Okay. Now we're going to move on to Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda in this poem हमें silence के बारे में बताते हैं. Silence was a way to stop, think and act. Pablo Neruda का ये मैसेज था कि ये दुनिया इतनी नॉइज में जीती है कि हम कभी भी अपने आप के साथ बैठ नहीं पाते. And that's what this poem is about. According to Pablo Neruda, जब हम still बैठेंगे और शांत बैठेंगे तो हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे और एक यूनिवर्सल हार्मनी वाली फीलिंग पैदा होगी हमारे अंदर. ओके. पाब्लो नेरूडा इस पोम में नंबर 12 का यूज़ करते हैं. दैट कैन बी एसोसिएटेड विद 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक और द नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एंड दिस सिग्निफाइज द कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, बिकॉज पाब्लो नेरूडा थिंक्स दैट द अर्थ विल इवेंचुअली रिटर्न टू इट्स ओन origin, which was of peace, before the world became noisy and violent. And this number 12 represents a cycle and cyclicality of life. All right? Poet कहते हैं कि ये जो silence हमें मिलेगा जब हम शांत बैठेंगे, when we will keep quiet, it will be exotic, it will be brilliant, because it will create a blissful moment and almost divine experience. मतलब आपको भगवान से कनेक्ट करने वाला एक्सपीरियंस बन जाएगा जब हम सब एक साथ होंगे और एक साथ शांत होंगे. उस मोमेंट के अंदर जो फिशरमैन हैं, ठीक है, जो वेल्स को और फिश को मार देते हैं, वो भी शांत हो जाएंगे और अपने सारे आइटम्स को नीचे रख देंगे. हेयर द फिशरमैन रिप्रेजेंट ऑल पीपल हु किल एंड हार्म अदर क्रीचर्स. पोम में वो ग्रीन वॉर्स की बात करते हैं. ग्रीन वॉर्स पे यहाँ पे होता है, मतलब है कि इन्वायरमेंटल वॉर किया जा रहा है. अ ग्रीन वॉर, you know, when two countries go to war, they destroy life, but they also destroy the earth. All right? Here poet says कि जो हम war wage करते हैं against our green zone of the environment and the earth,
it is symbolizing the exploitation of nature by human beings. पोम में wars with gas and wars with fire भी यूज किया जाता है. इसके जरिए पोइट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो नए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, लाइक वॉर्स विद एटॉमिक और न्यूक्लियर बॉम्ब्स, वो दुनिया के लिए बहुत खराब हैं. बिकॉज एज वी नो, न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर टेरेबल. They can literally destroy population. So here Pablo Neruda is making a case against them. Poet मानते हैं लाइफ में. So he is against total inactivity. जब वो कहते हैं कि अरे यार हमें शांत बैठना है, अरे यार हमें एक स्टिलनेस के साथ जीना है, so he is not saying कि हम कुछ ना करें, कि हम इनएक्टिव हो जाएं. ही इज ओनली सेइंग दैट हमें थोड़ा और माइंडफुली जीना है, एंड दैट इज हिज मैसेज. ही वांट्स टू इंटरप्ट द सैड एंड क्रूअल एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड. टू हिम इनएक्टिविटी मतलब कुछ ना करना इज डिफरेंट फ्रॉम कीपिंग क्वाइट. इनएक्टिविटी इज डेथ. Activity is the essence of life, and keeping quiet is also being alive. We can learn a lot from nature according to him. The poet involves the symbol of the Mother Earth to reinforce the idea that there is wisdom and activity and tranquility and peace. Because उसमें एक metaphor use किया गया है, when seeds come alive, when the nature comes alive. So that represents the ability of nature and human beings to come about from quietness and still be vibrant and energetic and alive. To him, the earth is calm and soothing when things appear to be dormant but actually are constantly active. Like अभी winter गया है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी species, they hibernate. They go into sleep. But when the summer and spring comes, they come about. So they were constantly active, but we thought they were inactive. The poet states that we must try to understand what life means in terms of activities. That is, which actions are worthy of being done and which are not. And this is a message I would like to give to all of you. Before you do anything in life, whether that's scrolling on Instagram, whether that's attending this lecture, I want you to be very, very mindful of what you're doing. Okay, be very, very mindful of what you're doing and constantly ask yourself, is it worth it or is it not? That's there. Did I miss a super chat? I think I did, right? How to make margin in OMR sheet? Do not make it. You don't need to make margins in OMR sheets. Also, अगर आपके sheets में margin नहीं है तो आप सिर्फ left side पे बनाना, दो fingers का gap लेके. Extract based. जी बिल्कुल, हम आपको ये नोट्स भेज देंगे, आपको जो करना है कर लो. सर्वर बना दो, टेलीग्राम सर्वर है, यू कैन जॉइन इट. Aunt Jennifer's husband was okay. Concurrent viewers, this that. CBSE, हाँ कल. Guys, please try to solve each and every question tomorrow. I agree with you. Yeah. भाई कल क्या होगा? कुछ नहीं, बढ़िया पेपर जाएगा ब्रो. जस्ट हमारे सारे वीडियोस देख ले, एनिमेटेड वीडियो सारे देख ले ब्रो. सब बढ़िया. This that. Basically the whole chapter is all about चुप हो जा भाई, बस चुप हो जा. Exactly, yeah. कल किसका पेपर है? Well, political science है यार. Is it necessary to draw? No. Do not draw margins on both sides. I repeat, do not draw margins on both sides. That's not recommended at all. Do not draw margins on both sides. Okay. Now let's move to A Thing of Beauty by John Keats. Okay, so John Keats is a romantic poet. He wrote in the 19th century, and part of the romanticism movement was to write about things which are beautiful and to see the sense of beauty in every ordinary thing. So this poem is about a sense of beauty in which a beautiful thing is eternal. मतलब वो forever beautiful रहेगी, ठीक है? There is a need to feel the impact of natural and man-made beautiful things. कि हर चीज़ में एक beauty है. इस माइक्रोफोन में beauty है, मेरे में तो of course beauty है, और आप में भी of course beauty है. A beautiful thing is eternal. वो forever है, वो कभी अपना charm नहीं खो सकती, and it has a lasting impression on our minds. तो poet John Keats इसमें beauty और happiness को एक साथ जोड़ देते हैं. Beauty का मतलब Keats के लिए होता है the sun, the moon, the old and young trees that give shade, clear rills and the musk rose. ये सारी नेचर की जो चीजें होती हैं, they have the power to uplift man's spirit by providing a sense of peace and serenity. To him, life is a series of journeys in which there is trials and tribulations, there's sadness, there's disappointments, and there is a sense of neglection of noble values among people. तो एक इंसान की जिंदगी तभी वर्थ लिविंग बनती है जब वो नोटिस करता है कि हाँ, मेरी जिंदगी में ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हमारे दिमाग में ऐसे फ्लैश होती हैं टू लिफ्ट द वेल ऑफ ग्लूम. मतलब एक जो ब्लैक क्लाउड सा सैडनेस का आ जाता है, वो ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हमसे निकाल देती हैं. ही टॉक्स अबाउट द ग्रैंड लेगेसीज ऑफ द माइटी डेड and the lovely tales that the lovely tales that have a sublimating effect on the man. Sublimating matlab, oh, if you're feeling sad and you hear something which makes you happy, that's a sublimating
effect. All the metaphors, all the alliterations, all the personifications, imagery, they're available in our animated video of A Thing of Beauty. And I think that's one of our best videos. So aap jaake wo dekh lo. It will make everything clear. But I'm sure this has also made everything clear. Any doubts? Sir, after exam Angrezi, watch each and every video of your thanks. Essay, anxiety at peak. Okay, is it okay if we don't? See, I would still say, because school didn't leave. I will upload this video back. Hey Dimple, Lama, what the hell? With brown Munde stare. What are you doing, bro? Yeah. Please do not do that. Guys, troll मत करो किसी को. Sir, आज मैंने 6 hours straight study किया. I'm proud of you. Weekend singer, writing section भी ठीक है यार. देख लेंगे अगर टाइम होगा तो. What the hell? In Grand Cut comment session. Guys, please do not bully people, please. Please. Please do not target anybody. What was... Okay. Schools. नहीं भाई ये नहीं करना. How can I improve my English? By listening to English songs and watching English movies. 25 hour पढ़ाई, very good. नहीं, it's okay if we don't draw margins at all on answer streams. Vritant, bro, left margin तो बनाओ, 2 fingers. 8 hours. Good job, Mythic. Good job, Mythic. Sir, मुझे bully किया जा रहा है. Journey to the end of the earth. हाँ होगा इसके बाद. What about reading and writing? Reading की मैंने tips दे दी हैं. Writing की मेरे पास सारी की सारी वीडियोस पढ़ी हैं. इधर कवर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. पोएम्स, हाँ इसमें बस रोड साइड स्टैंड करते हैं. ओके, अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट wrote The Roadside Stand, and that is basically a sympathetic and humane outcry against the economic disparity that prevails in the cities and countryside. So Roadside Stand by Robert Frost is an effort to highlight the fact कि हमारी ज़िंदगी में there are haves and have-nots, people who have privilege and resources and people who do not have privileges and resources. So the poet here is trying to tell us कि एक economic well-being of the country, whatever country you may talk of, is dependent on a balanced development of the cities and villages. मतलब हम cities और villages, the city and the countryside, we cannot ignore one and focus on the other. Like the rural and the urban in India, we need to make them come together and form something so that the economic prosperity of the nation is secured. इस पोम में आपको क्या क्या रिमेंबर करना है? ओके, वन थिंग कि जो रूरल फोक हैं उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड बना दिया है by adding a shed to an old house by the side of the road. वहाँ पे वो berries बेचते हैं और squash बेचते हैं. जो polished city people, polished यहाँ पे quotes में है because it is challenging our interpretations, because we believe कि जो लोग cities के बाहर रहते हैं वो इतने civilized नहीं हैं और जो लोग cities में रहते हैं वो civilized हैं. And this notion of civility is also very problematic because it is a colonial term, right? And in a post-colonial setting, this becomes very, very difficult to navigate. So the polished city people वो feel irritated. They feel irritated at the shabby stand. उन्हें लगता है ये क्या कर दिया है भाई, हम तो अपना सिटी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, ये क्या है? बिकॉज इट हैज़ बीन क्लमजिली पेंटेड अकॉर्डिंग टू देम, और जो साइंस हैं वो दूसरी डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं. लेकिन जो रोड साइड के लोग हैं, दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट. वो कभी भी बैग नहीं करते टू मेक अ सेल. They simply want to earn some cash so that they are able to live a better life. जो rural folk हैं, they are promised a better life by relocating themselves near cities and rehabilitating them. काफ़ी बार आपने देखा होगा dislocation camps होती हैं, जब कोई डैम्स बन रहे होते हैं तो फिर गवर्नमेंट बोलती है अच्छा हमें विलेज तोड़नी है, आप जाओ कहीं और चले जाओ. Another important thing that I want, not important, another interesting thing is there's this novel called The Color Purple by Alice Walker, which basically deals a lot with this aspect of removal of location. So if you're interested in literature, I think you'll be interested in that. However, the greedy good doers and the beneficent beasts of prey, such as the politicians, वो ये hard working और honest rural people को exploit करते हैं. जो city के लोग होते हैं उन्हें तो यार उनका culture होता है झूठ बोलना, exploit करना. But ये लोग जो साफ से होते हैं, they are being exploited by the people in the cities as well as people in authorities. The stand owners suffer a childish longing. They have a childish desire to have something that they can't have, which is कि वो city people बस रुक जाएं और उनसे थोड़े से items ले लें ताकि उनकी life improve हो जाए. लेकिन ये longing vain, useless, बेफालतू की longing है, because the car owners only stop to inquire about petrol or fuel, where the road was leading to, and for taking a U-turn. So they never stop
वो कभी रुकते नहीं हैं ताकि उन रोड साइड लोगों की सेल हो जाए, इवन दो देयर इज अ स्टैंड. इन फैक्ट दे लुक डाउन अपॉन देम एंड दे ओनली स्टॉप टू इंक्वायर अबाउट, ओ भाई पेट्रोल कहाँ है, अच्छा ये रोड कहाँ जा रही है, अच्छा मैं यू टर्न ले लेता हूँ. एंड that's why the poet feels pain and disappointment of the people at the roadside stand, and that is the summary of the poem. I request you to please speak in only English. I would do that, but like we have a lot of people here. Top tier animation. Thank you, man. English mix, हाँ यही है यार. Sir is anyone from DPS when I saw you. Your hair is very nice. Thank you. B then C as well as last A. C B A कर लो bro. A B C या C B A कर लो. बस ऐसे क्लस्टर मत करना उसको. Rhyme scheme and tones available in the videos. I'll send you the notes for this also, don't worry. Sir, first of all, big thanks to you. Thank you. That's so sweet of you. PDF कहाँ मिलेगी? On the Telegram group soon enough. Any tips on increasing the pace in unseen passages? Use the reading time. Read the questions of the unseen passage उसी में, and then read the unseen passage after that. That will solve. Vistas का the enemy बहुत बड़ा है, उसको पूरा पढ़ लूँगा. अरे भाई, who is this? Sanvi, please watch our animated video of the enemy. It covers everything. It's on our channel. Paying attention, just I can bet people are enjoying the comment section. I mean, कुछ तो है यार. You are explaining me. Sir, in which college are you? I'm in the University of Delhi North Campus. In an English honors program. That's all I can tell you. सिर्फ आंसर शीट, अगर आंसर शीट्स में ऑलरेडी मार्जिन है तो कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है. Okay, sir, thank you so much. You're very welcome. एनिमेशन किससे करते हो? आई एम नॉट एबल टू सेंड आउट इन अ सुपर चैट. सर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो फॉर एनिमेशन? सर प्रॉब्लम कितने आज में क्लास खत्म होगी? बस सून इनफ. Whole English syllabus done from your channel. Thank you, Arshan. Thank you. I really appreciate that, and I'm so grateful to be able to help you. So grateful for that. Time management for English exams. Do whatever you want. Just use the reading time for unseen passage. It'll solve everything for you. Om's views. Thank you, brother, for the super chat. I really appreciate your contribution. Sir, problem. Sir, from where you are? New Delhi, India. Sir, paper leak करवा दो. नहीं. Can we use black pen? I don't think so. Usually doesn't happen. मैं JNU try कर रहा हूँ JP Lang honors में. Very good, bro. Very good. Japanese honors is very good there. All the best to you, bro. I might see you in JNU. I'm done with revision. Gotta go. Thank you for today's revision. Thank you for joining, Lavanya. Poets and Pancakes की करवा दी हमने. आप पीछे ताके देख लो या फिर हमारे उस पे जाके देख लो चैनल पे for the animated summary. Sir, PDF, you'll get it after the class. Only blue. Your new subscriber is here. Thank you, Isha. Thank you. Thomas Shelby accent. Yo, it's that. Okay. My voice is awesome. Thank you very much. Correct sequence. ABC या CBA. Either one works. Thank you. What is the correct sequence? CBA, ABC. I'm not able to send outs. Then 40 rupees की हो जाएगी, I think. Sir, in bio, should we write declaration? What do you mean by declaration? Please proceed. Yeah, we are proceeding. Just give me a moment, please. I'm kind of thirsty. British accent. Why do you want me to teach in that? भाई तुम 12th के बाद CVT English की preparation की streams करोगे? Yeah, I will. Sir, you're awesome. I liked your videos. Thank you so much, Anjali. The real Slim Shady. I'm Slim Shady. Yes, I'm the real Shady. All the other Slim Shadys are just imitating. So, want the real Slim Shady? Please stand up. Please stand up. Please stand up. आगे का जल्दी करा दो, मुझे 9:30 सोना है. हाँ बस 2 मिनट यार, 2 मिनट. टाइम मैनेजमेंट फॉर एग्जाम हो गया. चलो. Honestly, your channel is best for English. Thank you, Sahil. Thank you, Anjali, Dio. भोजपुरी यार बस करो यार, छोड़ो अब, पढ़ो, चलो, come on, let's study, brothers and sisters and things and this that. Aunt Jennifer's Tigers, okay? So Aunt Jennifer's Tigers is a poem about patriarchy. If you don't know what patriarchy is, it's basically male domination in society. Adrienne Rich was a feminist writer who expressed her anger on the patriarchy.
इस पोम में ये बताया जाता है कि विमेन को अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए जीना चाहिए एंड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स और देयर फादर्स. ओके, एंड इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ which are experienced by a woman in a male dominated world. So basically, it says that in a patriarchal world, the institution of marriage is oppressive, which means that जब एक औरत एक मैरिज में आ जाती है तो वो उसे ऑप्रेस करती है. द मैरिज इट सेल्फ इज ऑप्रेसिव. ओके, so here, the Aunt Jennifer's tigers, which she keeps knitting, they symbolize a spirit of freedom which she is bereft of. मतलब जो tigers, Aunt Jennifer के जो tiger हैं, जो वो knit करती हैं और जो imagine करती हैं, वो उनकी manifestation of her freedom है, क्योंकि उनकी life में कोई freedom नहीं है. That's why she paints tigers, because अब सोचो, tigers free होते हैं, free to do whatever, free in their own spirit. They are not domesticated like Aunt Jennifer is. So she begins to explore her freedom unlike herself through the tigers. The tigers are dwellers of the green forest. वो green forest में रहते हैं, वो fearless हैं और वो ferocious हैं. This is in stark contrast. मतलब it is opposing Aunt Jennifer's lives to the suppressed womanhood in Aunt Jennifer's life. जो उनकी खुद की agency है, उनकी खुद की independence है, उनकी खुद का freedom है, वो खुद उनकी जिंदगी में exist ही नहीं करता. So the tigers are made to carry that forward. Aunt Jennifer के अंकल जो हैं, मतलब उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने उनकी लाइफ को बहुत बर्डनसम कर दिया है. उधर एक एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड. सो दिस बेसिकली सेज कि जो वेडिंग बैंड है, जो आप एंगेजमेंट में लगाते हो टू सिंबलाइज योर मैरिज, it doesn't have a massive weight literally. I mean, a ring would be like 50 grams or something. But in a metaphoric sense, it has so much weight that it is keeping her down. It's making her droop. Why? Because her marriage is oppressive to her. Here, ringed in the poem refers to the confines, constraints and the demands of a marriage that bind a woman. जो इतनी expectation होती है एक औरत से एक marriage में, जो उसे oppress करके रख देती है, it keeps her in a vicious grip of her unhappy married life. और हमारी society में डिवोर्स फ्राउंड अपॉन होता है, हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट फ्राउंड अपॉन होता है, और हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी इतना विमेन को दबाए रखती है कि वो कभी भी इस शैकल से निकल नहीं पाते. इवन आफ्टर आंट जेनिफर्स डेथ, शी वुड फील टेरिफाइड बाय द ट्रॉमा विच शी फेस्ड ड्यू टू हर डोमिनेटिंग हस्बैंड, जस्ट लाइक मोस्ट वुमेन वुड फेस ड्यू टू पेट्रियार्की. आंट जेनिफर्स टाइगर्स विल सर्वाइव इवन आफ्टर हर डेथ. जो टाइगर उसने बना दिए वो हमेशा फ्री रहेंगे, लेकिन वो खुद alive rahengi through her art form, her poems, which unfortunately are free, but she herself is not. And that ends the poetry section. I hope you understood what Adrian Rich meant. You're 6'4"? Damn. Quality is not good. पता नहीं यार, चल तो गया ये. You love BTS. Dove shampoo, what the hell? Shampoo use, यार मैं कह रहा हूँ यार, मैं I am not Punjabi. Congratulations. Due to your voice, I watched all your videos. Thank you. I appreciate that. मैं box बनाना है. Are you gonna enter CUET? I don't know. Wait, study roadside stand. Explain oxymoron. Basically, things like pretty ugly. Those two mean different things. A pretty thing can't be ugly, but we say pretty ugly. Or things like terrible achievement. That's an oxymoron. Black pen use नहीं कर सकते, तो आप क्या use कर सकते हो? You can just use a pencil and a scale. How to do time management? Use the reading time for. Sir, आप पंजाबी लगते हो. I am पंजाबी. आओ भैया कभी मथुरा, बुलाओ भाई, बुलाओ, हर जगह बुलाओ, आ जाएंगे. Okay guys, I'm giving you a break for 1 minute. I'll just get water. Alright, I'll just get water. Please be patient. I'm just getting water. Just give me a minute.
Hello, I am back. Can you hear me? Please tell me if you can hear me. Tell me if you can hear me. Sir, coffee? हाँ यार, कॉफ़ी की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है. लेकिन मैंने 3-4 पी लिए हैं सुबह से. चाय भी बहुत पी लिया है. हाँ. आपका वीडियो इतना लेट क्यों मिला? मिल तो गया यार, रिप्ले देख लेना, 2x पे हो गया काम तुम्हारा. मस्त एकदम. वी कांट हियर यू. अब तो सुन सकते हो यार. Can you hear me now? Hello, can you hear me now? Can you hear me? Hello. Okay, you can hear me. Cool. Cool. Very good, very good. ASMR. Okay, VJ Gamer. I'll give you ASMR. But there is nothing that I can do about it. Apart from just say whatever comes to my head. It's whatever. I'm just playing. So. Okay. Okay, I'm giving you a break till like 1 minute. If you guys wanna ask me anything which is apart from studies, please go ahead. Mathura, nice city. Nice mic, thank you. Follow the new notice format. जो दिया हुआ है वो करो. अब जाके चैप्टर समझ आ रहे हैं. थैंक यू. कैफीन ज़्यादा पीने से कुछ होगा? हाँ यार, अगर कोई रेगुलर ड्रिंकर नहीं है उसे बहुत एंग्जाइटी और जिटर्स होंगे. या मैं तो कहता हूँ यार, तुम दोनों अटेम्प्ट कर दो भाई. दोनों बोल दो, ऊपर लिख देना ओल्ड फॉर्मेट न्यू फॉर्मेट. हो गया काम तुम्हारा. नो, आई एम सिंगल. एनी इम्पोर्टेंट पोम? सारी इम्पोर्टेंट है. You're a star boy. Thank you. My voice, thank you. Any video games? I used to play a lot. Like I was a big gamer. Who is Aunt Jennifer? It's a fictional character in Adrian Rich's poem. अभी मैं क्या करूँ? मैं highly depressed हूँ. Start to work out. Eat protein-rich diets. Seek a therapist. Do things which pump your adrenaline. Take a sprint every day. Do things you love and enjoy. Make new friends, travel a little, and seek professional help. Depression hates action, basically. The more active you are, the less depressed you will feel. When we'll be beginning? Yeah, just after this. Extract की बहुत resources हैं, कोई भी extract पकड़ के ले लो. हो गया काम आपका. 12 questions from 18 chapters. That's CBSE, man. A roadside stand का video नहीं बनाया, but we did cover it here. No, I'm single by choice, bro. Like, sing a song. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. How we start questions? Starting से करो यार. Section wise करो. Either do C, B, A or A, B, C. Yeah, we're starting the third level in 1 minute. How to solve unseen passage? Yeah, just read the questions first in the reading time. Yeah. Please share this PDF. Yeah, I will in the Telegram group after we're done. Sir, paper कल है तो I know that. Are you a fan of Juice WRLD? Juice WRLD is one of my favorite artists. Repeat. एग्ज़ाम हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. जर्नी इसके बाद. हाँ भाई कर रहा हूँ यार, रुक जाओ यार. पढ़ते हुए द वीकडे. अरे भाई कर देंगे. अच्छा छोड़ो सब छोड़ो, पढ़ने पे आओ. कम ऑन. ओके. टू Bimp a Butterfly. I like I in that album. That's my favorite. I
I've been through a whole lot, trial tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a boat. I pray that the holy water don't go dry. Yeah, yeah. Okay, anyway. So the third level, the first chapter of Vistas is by Jack Finney. So Jack Finney wrote the third level. एक बहुत बढ़िया story है, which talks about fear, insecurity, war, and worry. This is set after the world wars, and it talks about trauma and the effect of the wars on humanity. That's what this goddamn chapter is about. So basically ये chapter aim करता है कि वो वापस रीडर्स को लेके जाए इन द 19th सेंचुरी, जहां लोग एक पीसफुल जिंदगी बिता रहे थे एंड दे हैड एम्पल टाइम फॉर देमसेल्व्स बिफोर द वॉर हैपेंड, और फिर सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई ड्यू टू द traumas and the impact of the world war on geopolitics. Okay, right. Now we need to understand the third level. Third level real nahi tha, guys. I don't know why people keep asking me that, but third level was not real. The third level is an imaginary thing. The third level, Charlie ekdam stumble kar jata hai while he's walking back home. So third level kya tha? Third level was a level of the Grand Central Station which had smaller rooms than the other levels. It had fewer ticket windows and it had wooden old style information booths. वहाँ पे लोग derby hat और gold pocket watches पहनते थे, which was fashion statements of earlier times. वहाँ पे लोग, like men, they used to keep beards, sideburns and mustaches. Now that's back in fashion. But in the setting of the story, men were clean shaven post the World War because soldiers were not allowed to keep a beard. But in the third level, men were still rocking that bearded look, like I am, because I'm handsome as hell. Women had skirts on and had high button shoes and legs of button sleeves. Brass spittoons were on the floor, open flamed gas lights. There were old style locomotives with a funnel shaped stack. ये सब ज़्यादा important नहीं है. You just need to understand कि ये different कैसे है. It had characteristics of the earlier times. Okay? And वहाँ पे एक newspaper मिला चार्ली को called The World. It was dated 11th June 1894. Okay? 19th century. 11th June 1894. Whereas he was probably existing in the 1940s or 1950s. Charlie wished to buy 2 tickets to Galesburg, Illinois, a town in the US. The clerk stared at him because उसने जो currency उसको पकड़ाई वो अलग थी. Remember, Charlie is from another time and he's giving this clerk currency of the future. So he started to fear and the clerk threatened him by calling the police, but nothing happened and he ran away. So basically, in reality, जब Charlie escape करता है और third level से भाग जाता है, he's moving from the past to present in the real time frame. But in actuality, he's losing his delusion. Because remember, the third level is a product of his head. Shipra ma'am, collab उनको बोल दो, हम कर लेंगे. Collab करने से happy birthday. That's not my birthday. I think you already know this. What do I know this? Telegram link at Grandicad. Sir, you are Eminem fan. Yes, I am. Ecstasy, Shipra ma'am, Omkar Joshi, blah blah blah. Okay, yeah. Charlie shares his experience. So Charlie के साथ ही experience होता है थर्ड लेवल का. तो वो जाके अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर को बताता है. वो कहता है नहीं थर्ड लेवल तो रियल है. सैम बोलता है चल बे, ये रियल हो सकता है क्या? तो सैम बोलता है कि ये जो आपका थर्ड लेवल है, इट्स अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. बेसिकली ये आपकी एक डिल्यूजनल स्टेट है जहाँ पे आपके सारे विश पूरे हो रहे हैं. जो चार्ली की वाइफ थी लुइजा, वो बहुत वरी हो जाती है और उसके एक्सपीरियंस में बिल्कुल नहीं मानती. प्रेसिडेंट्स स्वेयर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 लेवल्स. द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो बात हो रही है, जो उसके प्रेसिडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि भाई 2 ही लेवल हैं, कोई थर्ड लेवल है नहीं. सडनली एक दिन चार्ली का साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर disappears. Then Charlie gets a note from Sam dated 18 July 1894. Now suddenly Sam has left and has disappeared into the past, just like Charlie did. Sam in that letter tells Charlie to keep on searching for the third level. Okay? He reaches the third level Galesburg in a world of peace. Sam उधर एक नया business शुरू करता है grain और cattle का, and he enjoys a happy and peaceful life. First day cover. Okay, first day cover क्या होता है? This is important because ये इस पे question आ सकता है. A first day cover is when stamp collectors buy stamps on the day of the release. जैसे अगर January 1st को एक stamp release हो रहा है तो stamp collectors उसी दिन का stamp ले लेते हैं, which had the first particular stamp issued. They mail the envelopes with a blank paper in it with a postmark of the date to themselves. खुद को ही वो mail भेज देते हैं, and these covers remain unopened. So Charlie inherited this stamp collection from his grandfather. This is an important question. It might come. Charlie क्या था? He was a 31-year-old ordinary person who wanted to take temporary refuge from reality. All right? He had a wife, Louisa, who worried about his mental health, and he suddenly imagined himself at Galesburg, Illinois in 1894 to stay back at the third level. Why? Because in a post-World War world, he wanted to have a semblance of peace.
which he could not get. In comparison question, how to write answers. Basically, just contrast the two and try to point out differences as much as you can and then elaborate that. If you can give me a sample question, I'll answer that also. Please repeat. You can work on movies. I do act. Stamp वाला यार ये दोबारा पढ़ लो. Happy birthday. My favorite song. Can we have a chota sa Discord session? Sure, man. Why not? The enemy is an important. I'm begging you. Yes, the enemy is. The PDF will be uploaded on my Telegram, our Telegram, after this. Okay, the enemy is done. The Tiger King, one of my favorite chapters. Let's move on to that. I'll make a Google Meet, I guess. You can talk to me there. Explain Sam's letter to Charlie. Basically, Sam also reached the third level, which basically shows that Sam, despite being a psychiatrist, also had hallucinations. And he too wanted to escape this post-World War world in which there was a lot of pain and misery. सारी डेट एक और बार रिवाइज करवा लो. देख लो यार ऊपर. Okay, shout out. Yeah, sure, man. Okay. Alright, The Tiger King by Kalki. Tiger King is a satire. Basically, it makes fun of people जो पावर में हैं. राइटर हमें बताता है कि कैसे किंग्स जो अपनी वेलफेयर में नहीं, जो लोग अपने लोगों की वेलफेयर में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो सारी लॉस को ट्विस्ट कर देते हैं ताकि उनके खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट सर्व हो पाएं. ये स्टोरी है अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबांधापुरम, जो एक चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया था उन्हें कि उनकी डेथ का कॉज एक टाइगर होगा. ठीक है, उसने कहा था कि वो 99 टाइगर्स मार लेंगे लेकिन 100वें टाइगर में वो मार नहीं पाएंगे और वो खुद ही मर जाएंगे. सो इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रोफेसीज जो इस एस्ट्रोलॉजर ने बताई थी, उनको गलत प्रूव करने के लिए महाराजा ने 99 टाइगर्स मार दिए कुछ भी करके. ठीक है, लेकिन 100 टाइगर ने उसकी बुलेट एस्केप कर ली. लेकिन हंटर्स ने उसे मार दिया, उसको एक क्लोज रेंज में लाके. लेकिन किंग को लगा कि ये 100 टाइगर उसी से मरना चाहिए, लेकिन एक इनएनिमेट वुडन टाइगर ने अल्टीमेटली उसकी डेथ कॉज कर दी और ये चैप्टर उसके बारे में है. द प्रोफेसी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर प्रूव टू बी ट्रू डिस्पाइट द किंग्स बेस्ट एफर्ट्स टू प्रूव इट रॉन्ग, एंड दैट्स व्हाट द चैप्टर इज अबाउट. नाउ रिमेंबर, महाराजा प्रतिबांधापुरम वाज बोर्न एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड. क्योंकि वो पैदा होते ही he started speaking like a full grown man. Okay, astrologer ने एक prediction बताई about his death due to a tiger because the child was born under bull star. एक स्टार होता है एस्ट्रोलॉजी में, the bull star, and the bull and the tiger are enemies. Since he was born in the year of the bull, he would be killed by a tiger. ठीक है, 10 दिन का बच्चा एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा था, how was a 10-year-old kid even fluent? That's what the chapter is about in this particular context. जो चाइल्ड था वो था महाराजा प्रतिबांधापुरम का, लेकिन ही वॉज ब्रॉट अप लाइक एन इंडियन चाइल्ड, सॉरी एन इंग्लिश चाइल्ड, बिकॉज ऑफ कलोनियल नेचर्स. द प्रिंस ग्रू अप एंड बिकेम अ ग्रेट किंग. किंग ने बोला कि मैं एक टाइगर मारूंगा, उसने एक पहला टाइगर मार दिया, लेकिन चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आप 100 टाइगर से तो मर ही जाओगे. ओके, तो किंग बिकेम द सोल हंटर. ही बैंड हंटिंग इन हिज एस्टेट. उनके पूरे किंगडम में सिर्फ वही हंट कर सकते थे. वो चले, ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स एंड उन्होंने 70 टाइगर मार दिए. कभी कभार वो बुलेट मिस हो जाती थी तो किंग खुद उस टाइगर को अपने हाथों से पकड़ के मार देते थे. व्हाट अ चैड मैन, व्हाट अ चैड. Then he married a princess whose kingdom boasted of tigers. उनका purpose of love and marriage was also to fulfill his own ambition of killing tigers. Suddenly he killed 99 tigers, but he was unable to find the last tiger. King ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं टाइगर मारूंगा. रात को भी ये सोचता था, सुबह भी ये सोचता था. जो उनके कोर्ट का दीवान था वो एक ओल्ड फीबल टाइगर ले आया जू से. टाइगर किंग ने एम करा, लेकिन वो टाइगर उसी से फेंट हो गया. लेकिन किंग को लगा हाँ मैंने तो मार दिया, मैं तो चैड हूँ. लेकिन उसके बाद किंग चला गया तो टाइगर ने अपनी आंखें खोल ली. वहाँ पे जो विलेज हंटर्स थे उन्होंने उसे मार दिया. द किंग परचेज्ड अ वुडन टाइगर फॉर हिज सन in order to give him some special gift on his birthday. वहाँ पे भी उन्होंने laws को twist करा because selling was banned, but he still convinced the seller to give him something for free. Right? And there were some minimum prices as well. Watch the animated summary to know more. Okay? जो उसका wooden tiger का sliver था, it pierced the hand of the king. यहाँ पे उनका एक wound आ गया. वहाँ पे एक वहाँ पे ये टाइगर का हैंड है तो वहाँ पे wound आ गया and an infection developed in the hand of the Maharaja. And due to that infection, he had to undergo a surgery where 3 surgeons from Madras came, and
they announce the operation was successful, the Maharaja is dead. That is where the chapter ends. And this is very weird also, because the operation was successful, they say, and then they say the Maharaja is dead. So basically they were trying to operate in order to fulfill the prophecy of the astrologer. And this also talks about how people believe in things beyond them rather than what they do. King को aim labs में practice करनी चाहिए. Aim labs, भाई सब CSGO वाले लोग हैं क्या इधर? King was thinking, toppers really think. The Sophie has schizophrenia? It can be an interpretation, but she was delusional for sure. Sophie was mad with no brain. I agree with that. Where did Sam disappear? Hallucination. It's a metaphorical representation. Richa, this is pre-recorded. Just watch our animated summaries. They're all on our channel. Poets and Pancakes is hella confusing. We did cover that earlier though. Sam and Charlie were mentally disabled. Yeah, but basically it's a commentary on the fact that एक post World War country में लोग कितना एंग्जाइटी, फियर और एक सेंस ऑफ लॉस से जीते थे. तो उसकी वजह से they wanted to escape. King का aim assist author. Is there any chapter where satire is there? Yeah, most poems. तुम्हारा on the face of it नहीं है ना? It was a beautiful. अच्छा तुम्हारा है on the face of it. Yes, you do have on the face of it. Okay, Tiger King हो गया. Journey to the end of the earth. I'll just read this out to you. So student ice program पे होते हैं, ठीक है? To Antarctica जाते हैं वो. एक Russian vessel में सब बैठते हैं, which is called Academic Shokalsky. They begin at 13.09 degree north of the equator in Madras. They travel over 100 hours by car, aeroplane and ship to reach Antarctica. They cross 9 time zones, 6 checkpoints, 3 oceans and many ecospheres. I'll tell you, इसकी हमने बहुत beautiful सी, ये बहुत बकवास chapter है. I don't know why this is part of an English literature class. But remember that हमने इसकी animated summary बना दी है. I really don't want to go over this because this is very factual and I think that you should watch the animated summary of this chapter. Isko just have a look at this when I send the notes and just have a look at the animated summary. There is no point in covering this chapter because I cannot explain facts. They just have to be memorized, unfortunately. We'll move on to the enemy. That rhymed. Oh my god, what am I saying? Hello. Sir, which chapter is this? Have you watched Fight Club? Yeah, it's one of my favorite movies. It's one of my favorite movies for sure. Guys, can you please send this stream to your friends? I can. Have you watched Fight? I did. The face of it made me emotional at the end. Yeah, true. Okay, the enemy. So उसका context क्या था? Japan और America war पे थे during World War II. They were on opposites, allies and whatever. The Allied forces. डॉक्टर सदाओ वॉज अ जापानीज सर्जन जो अमेरिका में ट्रेन हुए थे. एक दिन उनके और उनकी वाइफ हैना को एक वुंडेड अमेरिकन सोल्जर मिला जो एक एस्केप प्रिजनर था ऑन द बीच नियर हिज हाउस. सदाओ और हैना बहुत एप्रीहेंसिव थे कि वो एक अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करें, लेकिन वो फिर भी अंदर उसे ले गए बिकॉज ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज डॉक्टर सेल्फ एंड हिज नेशनलिस्टिक सेल्फ. एंड सदाओ रिस्क्ड हिज ऑनर करियर इन लाइफ टू ट्रेड द सेलर ऑपरेटिंग ऑन हिम एंड सेविंग द लाइफ ऑफ द एनिमी. This chapter is about questioning the notion of the enemy because Sadao basically lets go of the conception of the enemy and decides to operate on the man even though he is at opposite forces politically. However, being a loyal Japanese person, he reported the soldier to the general of the Japanese military. General ने Sadao को बोला कि वो arrange करेंगे assassins के लिए so that the American soldier becomes terminated. The general was sick and needed Sadao as he was the best surgeon in Japan. The assassination does not take place because, well, this also comments on the fact that the general was a very lazy, stupid man. And with a sigh of relief, Sadao helps the soldier escape by giving him food and setting him to go to a particular island. This chapter is not coming, sir. Which one? Is this not coming? The enemy is a part of your syllabus. Yeah, it is. Out of patience, you really think you can get rich by barbar? How can you share a PDF of notes? Yes, I will share a PDF of notes. I will do that. Don't worry about it. This chapter. How can we afford a sports car? Weekday spitting verses. Whatever. Okay. What do we need to remember?
डॉक्टर सदाओ होकी का हाउस था नियर द कोस्ट इन जापान. सदाओ होकी के फादर एक बहुत बड़े पेट्रियट थे, लेकिन उनकी ओनली कंसर्न थी सदाओ को एजुकेट करना. डॉक्टर सदाओ को इस सेंटिमेंट से अमेरिका भेज दिया गया था टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन. डॉक्टर सदाओ वाज नॉट सेंट अलॉन्ग विद द ट्रूप्स ड्यूरिंग द वॉर बिकॉज द जनरल वाज अंडर ट्रीटमेंट एंड नीडेड हिज सर्विसेज. डॉक्टर सदाओ एक ऐसा ब्रिलियंट सा सर्जन था बिकॉज ऑफ हिज एजुकेशन इन अमेरिका, और जनरल को एक सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी, इसकी वजह से डॉक्टर सदाओ वाज नॉट सेंट फॉर द वॉर अब्रॉड. ओके, एक दिन डॉक्टर सदाओ को एक इंजर्ड यंग सोल्जर मिला जो क्रॉल कर रहा था उनके आइलैंड पे. डॉक्टर सदाओ बॉट द वाइट सोल्जर, द वाइट स्किन अमेरिकन सोल्जर, उनके अपने घर में एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम, विच ऑफेंडेड द सर्वेंट्स इनसाइड दिस हाउस एंड दे डिसाइडेड टू लीव हिज हाउस. डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया टू ट्रीट द सोल्जर इन स्पाइट ऑफ द ऑपोजिशन फ्रॉम द सर्वेंट्स. दे वर लाइक, भाड़ में जाओ, वील ट्रीट दिस पर्सन, वी आर डॉक्टर्स फर्स्ट, जापानीज सेकंड. डॉक्टर सदाओ की वाइफ हैना बहुत टेंस थी क्योंकि उनके घर में एक एनिमी था, द वाइट स्किन अमेरिकन. डॉक्टर सदाओ ने जनरल को बताया इस पेशेंट के बारे में, और जनरल ने बोला टेंशन मत ले, मैं उसको असैसिनेट करवा दूंगा. डॉक्टर सदाओ उस रात को बहुत ज़्यादा टेंस हो गए, बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो गए, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गए, लेकिन कोई भी असैसिन्स नहीं आए. सो उन्होंने बोला चलो मैं अब अमेरिकन भैया की हेल्प करता हूँ, उन्हें एक बोट में खाने के साथ भेज देता हूँ और बाकी सारी चीज़ें जो उनको चाहिए होती हैं. उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर उन्हें ज़्यादा फूड की ज़रूरत हुई उस वाइट स्किन अमेरिकन को, तो वो उनको provide करेंगे by giving him a certain sense of a light which he can wave, and once he sees it in the dead night he will send him more food. So the next day when Dr. Sadao went to treat the general, he told him that the man had escaped, but Dr. Sadao did not tell the general कि उसने ही उसको escape करवाया है. You have black noodles on your head. Yeah, they're very delicious. थर्ड लेवल इज इमेजिनरी. जब आप एक डिल्यूजनल स्टेट में होते हो तब आपको पता नहीं होता क्या रियल है क्या नहीं है. कैन यू गिव नोट्स ऑफ करंट स्ट्रीम आफ्टर द स्ट्रीम एंड्स? यस, आफ्टर द स्ट्रीम एंड्स. Do you watch anime? I used to. पोएटिक डिवाइस करा दिए हैं, करा तो दिए हैं. You're looking like a joker. Thank you very much. W raise for real. Oh, hi Jatin bro. What's good? What's good? Okay. What chapters are left? We have On the Face of It and Memories of Childhood. Okay. Okay. On the Face of It was written by Susan Hill. ठीक है. इसमें क्या होता है, मिस्टर लैम्ब एक अपने गार्डन में बैठे होते हैं. सडनली एक यंग लड़का आता है डेरी, क्योंकि उसको लगता है कि कोई भी उनके घर में है नहीं. ऑल्दो उस गार्डन का गेट जो उस घर में है वो खुला हुआ था, उसको फिर भी लगता है. तो डेरी आ जाता है अंदर बाय जंपिंग द वॉल डिस्पाइट द गेट बीइंग ओपन. डेरी मिस्टर लैम्ब को देखता है बैठे हुए गार्डन में और वो उससे डर जाता है. मिस्टर लैम्ब डेरी को बोलता है कि गेट्स तो मेरे खुले रहते हैं यार, कोई भी अंदर आ सकता है, तू भी अंदर आ जा. मिस्टर लैम्ब उसे अश्योर करता है कि वो चाहे तो वो उधर स्टे भी कर सकता है. डेरी बोलता है कि लोग उससे डरते हैं क्योंकि डेरी का फेस जला हुआ है, और दैट्स वाई पीपल स्टार्ट टू हेट हिम बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ड फेस. मिस्टर लैम्ब कन्विंस डेरी कि both of them were similar as both of them faced a disability. Now note, Derry and Mr. Lamb are very opposite people. Mr. Lamb is very elderly, Derry is very, very young. Mr. Lamb is very mature and Derry is not mature at all. But Mr. Lamb still found a commonality between both of them, that they suffered from a disability. What was only different was their perspective towards the said disability. Mr. Lamb ने बोला कि आपको ये सब bother नहीं करना चाहिए about what other people say of you or think of you. Say about you, think of you or even do. डेरी इस बातों को सुन के बहुत इंप्रेस हो गया about these positive thoughts. Gradually, Derry was able to realize कि वो भी लोगों से better है. That just because उसका face जला हुआ है doesn't mean he's not a human being with his own capabilities. He decided to go home right about, and then when he reached his home, he informed his mother about this. And then, after fighting with his mother, who reacted very severely to him, his own mother started to make fun of his burned face. You know, there's this phrase called a face only a mother could love, which basically says कि कोई ना कोई मतलब it will still be loved by somebody's mother. Even Derry's mother did not like his face, but he still fought in order to come back and help Mr. Lamb. ठीक है. Derry इतना fascinate हो चुका था Mr. Lamb के talk की वजह से, उनके बातों की वजह से, that he was drawn towards Lamb in such a magnetic way.
But when Derry came back, he was shocked to see that Mr. Lamb had fallen from the ladder and had bled to death. Derry cried, turned emotional, but because of this encounter, he gained the confidence to face the world. So, in relation, Derry was changed by Mr. Lamb because Mr. Lamb taught Derry how to live. The bond between Derry and Lamb is their disability. You want hair like me? मेरे तो natural है, but you can get curling done. Perming कहते हैं उसे. Why all chapters have some element of mental illness? Because literature deals with the human experience, and mental illness is unfortunately a very, very common theme in the world we live in today, and the world that has existed prior to this. Imagine you Japan, Nagasaki. Oh my god. हो गया क्या? I got one question. You can ask it. Sure. पोम्स करा दी भाई, हो गया, काफ़ी टाइम हो गया पोम्स कराए हुए. बस उनको पता चल जाता है लास्ट पोएट्स एंड पैनकेक्स वाले सीन में कि स्टीफन स्पेंडर इंग्लिश मैन था. यू लिसन टू टेलर स्विफ्ट समटाइम्स. हाउ डिड मिस्टर लैम लेग्स वर डिसेबल्ड, ये नहीं बताया गया है. डिड सैम रियली गो टू द थर्ड लेवल? हेलुसिनेशन. हाउ टू सॉल्व एक्सट्रैक्ट्स, ऑलरेडी आंसर्ड. गूगल मीट कर लेंगे ब्रो, क्यों नहीं. What is the bond that unites Derry and Lamb? Their disability. What separates them is their reaction to said disability. Yeah. Where can you get this PDF? I will send you this PDF after this particular live stream is done. How, by any chance, are you taking creatine? Because मैं notice कर रहा हूँ तुम बहुत पानी पी रहे हो. I'm not taking creatine. I just drink a lot of water. How can your past doesn't need you? Very true, bro. Your future needs you. Your past doesn't. The past is gone. That's why it's called Bhutkal. Was Lamb dead at last? Yeah. Mr. Lamb died in the ending. मैं अभी आया लाइव में, पीछे देख लो. या थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया कि ब्यूटीफुल चीज़ें आपको हैप्पी कर सकती हैं. ओके, सो फॉर द फाइनल स्ट्रेच ऑफ द चैप्टर्स, memories of childhood. This is a dual chapter. It has two aspects to it, which means it has two parts. All right. How to become cabin crew. आज रात बाहर जागूं. अगर आपने नहीं पढ़ा तो देख लो यार, मेरे एनिमेटेड वीडियोस देख लो, वो 3 घंटे में आपको पढ़ा देंगे सब कुछ. How is Mukesh different? How it's fine. It's a thing of beauty का central idea बता दिया मैंने. Again, like if you want quick doubt solving, then just send a super chat or something. Sometimes I listen to Taylor Swift. I'm not wasting time, yeah? Okay, finally. Oh. Okay, for the final stretch, part 1 of Memories in Childhood by Zitkala Sa is called The Cutting of My Long Hair. Zitkala Sa एक native American Indian थी. American Indian is a term which refers to people in America who were of indigenous population. So अगर आपको नहीं पता, America was a land of indigenous people who were brown skinned, but after Columbus they were killed and displaced, where America eventually became the America we know today. So these people who still survive, they're referred to as indigenous Americans or red Indians or American Indians. Not Indian American. Indian American would be people like us who go to America. American Indians refer to red Americans, red Indians. So basically she wrote about her experiences at the Carly's Indian School. उनका जो पहला दिन था स्कूल पे वो बहुत बिटर कोल्ड था.
वहाँ के जो कस्टम्स और रूल्स थे उनके लिए बहुत स्ट्रेंज और न्यू थे. शी वॉज फोर्स टू वेयर क्लोथ्स दैट शी कंसिडर्ड अनडिग्निफाइड उनके कल्चर में. She felt very uncomfortable because she did not know the table manners at breakfast. Remember that she is coming from a very different community and she's being taught very different things. And she's being oppressed by them. Her worst nightmare was when उनकी फ्रेंड ने उन्हें बताया कि उनके बाल कट जाएंगे. Remember that there is a very political message to style, fashion and display. Like काफ़ी कल्चर्स में एक सर्टन टाइप ऑफ हेयर अप्रिशिएट किया जाता है और काफ़ी कल्चर्स में वो सर्टन टाइप ऑफ हेयर बहुत बुरा और सैवेजरी टाइप का माना जाता है. शी ट्राई टू रेजिस्ट दिस बाय हाइडिंग अंडर द बेड, बट उनको उनके बालों से ही ड्रैग आउट किया gaya, उनको टाई कर दिया गया एंड हर हेयर वॉज चॉप्ड ऑफ. सो दैट वॉज हर सेंट्रल ट्रॉमा. द फोर्स्ड कटिंग ऑफ हर हेयर which meant so much to her, made her suffer tremendous agony, and she lost all spirit to fight. Okay? Now, what do you need to remember in this? Let's move on. All right. Pura course. Native American. Yeah, that's what this means. Anyway. Okay. So the first day of the narrator was in a new school in the land of apples. A large bell was made to call the children for breakfast. एक large bell थी जो रिंग होती थी तो ताकि बच्चे आके ब्रेकफास्ट खा लें. जिट कलासा बहुत ह्यूमिलिएटेड फील करती थी क्योंकि उसकी ड्रेस बहुत टाइट थी. जो उनकी यूनिफॉर्म थी वो बहुत टाइट थी. उनके कल्चर में वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था. एक स्मॉल बेल टैप्ड टू ड्रॉ द चेयर्स फ्रॉम अंडर द टेबल. सो बेसिकली एक बहुत अथॉरिटेरियन स्कूल था जहाँ पे इतने छोटे एक्शंस टू ड्रॉ द चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल उसको भी एक बेल प्रमोट करती थी. दिस इज कॉल्ड पैवलोनियन कंडीशनिंग इन विच यू रिलेट टू थिंग्स टू अनदर. एक और बेल थी टू मेक देम टेक देयर सीट. सो हर चीज़ की बेल थी. देयर बिहेवियर वॉज बीइंग एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड. द नरेटर वॉज न्यू टू दिस सिस्टम, सो शी सैट डाउन एट द फर्स्ट बेल ओनली. शी स्टार्टेड गेटिंग नोटिस बाय हायर अथॉरिटीज़. उन्होंने देखा ये बच्ची तो बिल्कुल हमारे कस्टम्स फॉलो नहीं कर रही है. उससे वो डर गई. उसी दिन इवनिंग में उसकी फ्रेंड जूडविन ने उसे बोला दैट दे वर गोइंग टू कट जिट कलासाज हेयर. बट द नरेटर वाज़न्ट गोइंग टू गिव अप लाइक दिस. उसने बोला मैं लड़ूंगी मैं लड़ूंगी मैं लड़ूंगी. तो वो भाग गई ऊपर. शी हिड हर सेल्फ अंडर द बेड इन अ लार्ज रूम. वहाँ पे लोग आए, उसके बारे में इंक्वायरी करी, उसके बारे में पूछताछ करी. बट शी हर्ड देम. शी वॉज स्केयर्ड बट शी वॉज नॉट रेडी टू सरेंडर. वो डर गई थी लेकिन वो गिव अप नहीं करना चाहती थी. सो शी रेजिस्टेड बाय स्क्रैचिंग वाइल्डली. Ultimately, she was dragged from there and her hair was cut. She wept and remembered her mother who herself sent her to that school. And this was the beginning of her miseries as she was treated like an animal. And why was she treated like an animal? Because she was a Native American or a Red Indian. And this details the central theme of this particular chapter. बोर हो रहे? हाँ भाई, बस लास्ट चीज़ बची है, फिर निकलते हैं. All right. Now for the final stretch. Part 2, we too are human beings. Now, the writer of this is Bama. Bama एक तमिल दलित वुमन है. उन्होंने अनटचेबिलिटी की प्रथा को बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर लिया था अपनी ज़िंदगी में. एक दिन उन्होंने एक एल्डरली पर्सन को देखा जो एक फूड पैकेट कैरी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स. वाई? स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल इसलिए हो रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट सपोज टू टच द फूड बिकॉज ऑफ हिज कास्ट. उसको ये बहुत फ़नी इंसिडेंट लगा क्योंकि वो बच्ची थी. बट जब उसने अपने बड़ी भाई को ये बात बताई तो उसने बताया कि ये मैन क्यों असली में ऐसे पकड़ के चल रहा था उस फूड पैकेट को. उसने उसको ये भी बताया कि उनकी फैमिली भी एक सपोजिट लोअर कास्ट में बिलोंग करती है. उसके भाई ने अपनी बहन को कहा कि तू बहुत हार्ड वर्क कर ताकि तू एक ऑनर और डिग्निटी कमा पाए अपने लिए. बमा बहुत इंस्पायर हुई उनकी बातों से टू फाइट द इनजस्टिसेस थ्रू एजुकेशन एंड शीयर हार्ड वर्क. वो बोलती थी ठीक है, सोसाइटी में जो भी हो, मेरी खुद का हार्ड वर्क और मेरी खुद की जो विल पावर है वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए. सो शी स्टडीड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, देयर बाय डिफीटिंग द ऑपरेशन दैट वॉज प्लेस्ड ऑन हर. इन क्लास 3 बामा बहुत इनोसेंट थी. उसको अनटचेबिलिटी की प्रथा के बारे में कुछ नहीं पता था. वो अपनी ज़िंदगी बस खेल चाल में बिताती रहती थी. जब वो अपने स्कूल से घर जा रही थी या फिर स्कूल से घर आ रही थी तो उसकी जो वॉक थी वो 1 घंटे की थी. और जब वो यहाँ जाती थी शी यूज्ड टू कम होम वॉचिंग द इवेंट्स ऑन हर वे बैक.
बहुत फन एंड गेम्स होते थे, नॉवल्टीज, ऑडिटीज इन द स्ट्रीट्स, शॉप्स एंड मार्केट प्लेस, वहाँ पे पपेट शो होता था, स्नेक चार्मर होता था, चॉपिंग ऑफ अनियन हो रही होती कहीं पे फिल्टर कॉफ़ी पोर हो रही थी, एंड ऑल सच इंटरेस्टिंग थिंग्स. एक दिन उन्होंने देखा एक थ्रेशिंग फ्लोर जहाँ पे लोग कैटल को ड्राइव कर रहे थे इन पेयर्स राउंड एंड राउंड. सो दिस वॉज एन एंटरटेनिंग थिंग टू हर. ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज एंटरटेनिंग टू बमा. लेकिन एक दिन उन्होंने एक एल्डरली पर्सन ऑफ द विलेज को देखा होल्डिंग अ पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग इन अ फनी मैनर. शी वॉज सरप्राइज्ड एंड अम्यूज्ड एट द मैनर दैट ही कैरीड द पैकेट, एज आई मेंशन्ड अर्लियर. उन्होंने ये फ़नी इंसिडेंट अपने ब्रदर को बताया. उनके ब्रदर ने उन्हें अनटचेबिलिटी की प्रथा के बारे में बताया. उन्होंने एक्सप्लेन करा कि एक ह्यूमिलिएशन और स्टिग्मा क्यों अटैच होता है अनटचेबिलिटी से. उन्होंने बोला कि अगर आपको अनटचेबिलिटी से फ्री होना है तो आप अपनी स्टडीज़ में बहुत हार्ड वर्क करो ताकि आप सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल बन पाओ. एंड देन उन्होंने वो लेसन बहुत दिल पे ले लिया. एंड देन शी वर्कड हार्ड थ्रू आउट हर लाइफ, एज इज एविडेंट इन द फैक्ट दैट शी decided to work very hard and stood first in her class. Oh my God. Finally, we're done. Jesus Christ. Okay, guys, I think that covers everything. This took longer than I expected, but I hope that you were able to get something out of this and that you were able to understand literature in a fun manner and have fun with me through this lesson. Again, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारे एनिमेटेड वीडियोस देख लें एंड उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. एक बार अगर आप कर सकते हो तो एनिमेटेड वीडियोस देखने के बाद चैप्टर रीडिंग भी कर लेना, और उसके बाद अपने आप को ये बोलो कि आपका जो कल एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग इनसाइड ऑफ यू टू परफॉर्म वेल एट एनीथिंग. अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो आप तब भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो. You just need the dedication and the will like Bama had. She stood first in her class. Why can't you? Just spend the night studying if you haven't studied anything. Okay? अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, I'm available on Telegram at grandcad. And I'm really exhausted, so I'll go and chill for a while. But I think I'll make a meet for a minute if anybody wants to join it. You can talk to me if you want. Uske baad I think I'll go. I'll just make a G meet for a while. Any questions? Yes, we can. Please upload the PDF. Yeah, I will do that. Sir, please provide the notes. Yeah, I'll just upload it. Please, don't worry. टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ अभी डाल रहा हूँ. I will upload the PDF very soon. Apart from that, thank you very much for everything. Bye. So, tabit kharab nahi hai, I'm just very tired. Okay, till next time, keep winning, you champions, and all the very best. Tada, bye. Bye-bye. Bye-bye. Has it ended?